Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine you are standing right at the front desk of a bustling, high-end hotel. Oh, that is a stressful visual right off the bat. Right, but you want a guest? You are the person actually running the floor. Okay, I'm picturing it. So the polished marble floors are gleaming. There is this soft ambient music playing in the background, but the reality of your immediate moment is, it's anything but serene. It never is in hospitality. Exactly. The main phone line is just ringing incessantly. It's a guest complaint from the penthouse, and let's just say they're not happy. Naturally. And right in front of you, there is this line of exhausted, impatient new arrivals waiting to check in. They're shifting their weight from one foot to the other, making that really aggressive eye contact. The kind that says, acknowledge me right now. Yes, exactly that look. Meanwhile, a housekeeper is radioing your earpiece for immediate instructions about a room turnaround for a VIP. And the concierge is waving you down from across the lobby with an urgent question about a high-stakes dinner reservation. Honestly, my heart rate is going up just listening to that scenario. I mean, for most of us, right? For the vast majority of the population, that level of simultaneous, unrelenting demand sounds like a fast track to a literal panic attack. Oh, absolute sensory overload. It's cognitive overload. It really is. But here's the fascinating thing. For a very specific type of person, this chaos isn't draining at all. Not even a little bit. No, it is actually deeply energizing. They don't just survive that chaotic juggle, they fundamentally flourish in it. It really is an incredible psychological phenomenon, and it completely upends how we traditionally think about workplace stress. How so? Because, stress is stress, right? Well, we are so conditioned to view that kind of intense environmental pressure, that a constant bombardment of competing demands, as a universal stressor, like something management desperately needs to mitigate or eliminate. Right, because usually you want a calm workplace. Exactly. But you are entirely right about this specific type of person. For individuals with the specific cognitive and trait-based makeup, that exact high-pressure multitasking environment is their natural habitat. They just thrive in the noise. They really do. They find a distinct rhythm in it. When the demands multiply and most people would just shut down or freeze up, these individuals actually light up. They completely lock in. And understanding exactly why they light up, and honestly, more importantly, how organizations might accidentally be extinguishing that exact light, is what we are unraveling today. It's such a vital conversation for anyone in management to hear. It really is. And we are basing this entire discussion on a phenomenal article published in the prestigious Journal of Occupational and Organizational Psychology. Which is just a powerhouse of a publication. Oh, absolutely. For those of you following along with the academic landscape, you already know that is an ABDC-A star-listed journal. The absolute gold standard. Yeah, it represents the pinnacle of peer-reviewed organizational psychology literature. Yeah. Getting published there means your methodology and your theoretical frameworks have survived a truly brutal gauntlet of scrutiny. It absolutely does. The level of empirical rigor required to pass the peer review process at an A-star journal means the data we are going to talk about today isn't just, some interesting theory. Right. It is battle-tested. It is statistically rock solid. And before we get into the weeds of how this whole phenomenon works, we definitely should acknowledge the global team of scholars who meticulously crafted this research. Yes, credit where credit is due. The study is led by Michael Asiedu Gyensare, who is affiliated with both the University of Kent and Oxford Business College. He worked alongside a truly stellar group. He did. He worked with Gbemisola Soetan from Monash University. Right, and also Chidiebere Ogbonnaya and Joan-Ark Agyapong from King's College London. Yeah, with Agyapong also holding an affiliation at the University of Cape Coast. And we can't forget Hamid Roodbari from the University of Surrey. It is a genuinely powerhouse team spanning across multiple continents. It brings such a great diverse perspective to the data. It really does. Now, before we really pull apart this mystery of the high-performing hotel worker, I want to quickly share some context about our own schedule and some really exciting developments in the academic community that you will definitely want to know about. Yes, some important housekeeping to get through. So, starting from March 2026, we actually transitioned our format to a weekly release schedule. We are now featuring a new discussion on every Sunday and Monday. A nice little weekend and early week routine. Exactly. On Sunday, we tackle
tackle a classic paper or a major book review, while our Monday releases keep the focus strictly on publications from top-tier, peer-reviewed journals. Just like the one we are exploring right now. Right. And we deeply appreciate our loyal subscribers. We really want to thank you for supporting this initiative and sticking with us through the schedule change. And, there is a very specific, deliberate environmental reasoning behind this scheduling choice. Yeah, let's talk about that, because I think it's important to be transparent. It is. As the technology behind content creation evolves, we have to acknowledge that AI-assisted production models are incredibly heavy on nature and the climate. It's something people don't often think about when they listen to a digital file. Exactly. Specifically, there is a considerable water intake required by the back-end data centers just to cool the servers running these complex operations. It's a massive physical footprint for a digital product. It really is. Yeah. So limiting our release to this specific weekly schedule is our tangible way to give back to global climate change initiatives. We want to ensure we are maintaining the deep richness of our discussions without ignoring the environmental footprint of the tools we use to bring them to you. Quality over sheer quantity, while remaining responsible stewards of the environment. I couldn't have said it better myself. And along those same lines of community responsibility, we also want to share that the Academy of Management SIM Division, that's the Social Issues and Management Division, has quietly launched an incredibly valuable new monthly initiative. Oh, yes. This is called AOM SIM-Bytes. Right. And it is such a brilliant resource, especially if you are navigating the early stages of an academic career. It really is a goldmine for PhD students. And so starting from June 2026, the SIM Division has been releasing these real-styled short videos featuring senior scholars and prominent faculty members from across the management community. They're designed specifically for early career scholars and PhD students who just need those high-impact, concentrated insights without reading a 50-page manuscript. Exactly. And the lineup is already incredible. In fact, the very first YouTube short in the series features Professor Ed Freeman. Which is huge. He is widely recognized as the father of stakeholder capitalism. Yeah, having a thinker of his magnitude kick off the series is just incredible. And we really want to give a massive shout out to the dedicated team spearheading this whole thing. It takes a village to put something like this together. It does. This initiative is being driven by the SIM Curriculum Development Committee. And a fun behind-the-scenes fact, our own producer, who is actually a member of this committee, has been volunteering actively with the SIM committee leads for the past year. Doing a lot of the heavy lifting. Yeah, working on the planning, the content design, and the editing of the AOM SIM-Bytes initiative. It is a tremendous labor of love from everyone involved. It really is. The entire initiative is the brainchild of Professor Sheldine Simola from Trent University in Ontario. And it is being executed forward right now by the committee chair, Professor Jennifer Griffin from Loyola University in Chicago. The link to check out AOM SIM-Bytes is right down in the show notes. Please do click over and support that project. It's well worth your time. Highly recommend it. And as always, we highly urge you to make the time to read the thoughtfully crafted article we are analyzing today. The link to the full paper is also down in the show notes. You really get the full flavor of the research when you read it yourself. Okay, so let's get back to the hotel lobby. Let's break this down gently. Let's do it. If you were sitting across the table from, say, a first-year graduate student, someone totally new to academic research, how would you summarize the core plot of this paper in plain, simple English? I would frame the narrative like this. Think about the hospitality industry. Okay, I'm with you. It relies almost entirely on the emotional and physical labor of its frontline employees. The receptionists, the concierges, the floor managers. They are the face of the brand, really. Exactly. This paper specifically isolates and studies employees who possess a psychological trait called polychronicity. Polychronicity. Okay, what does that actually mean on the ground? In the simplest terms possible, polychronicity is a natural, hardwired preference for juggling multiple tasks all at once. Rather than doing things sequentially, like one after the other. Exactly. And the authors discovered that this natural preference makes these specific workers incredibly engaged in their chaotic jobs. Because it matches their internal wiring. Right. And that deep engagement leads directly to them thriving, which in this specific academic context means they are constantly learning, adapting, and acquiring new skills on the fly. They sound like the ultimate dream employees for any manager. They absolutely are.
But here's the plot twist, and it's a massive one. Yes, the counterintuitive twist. This is my favorite part of the paper. So the researchers found that when hotel management tries to help these highly capable juggling employees by pulling them off the floor... And put them through extensive formal training programs to build their skills, right? Exactly. When they do that, it completely backfires. Wait, completely? Yes. The formal training actually drains their natural energy, drastically reduces their engagement, and essentially halts their learning process entirely. Okay, I have to push back here immediately because that sounds completely backwards to everything we are taught in business school. It does sound like a contradiction at first glance. Right. We are conditioned to believe that training is the ultimate corporate good. Like, if I naturally love doing 10 things at once, shouldn't I be the absolute best person in a training seminar? You would think so. Why would my engagement suddenly evaporate just because HR put me in a classroom to learn, I don't know, a new software system? It is entirely counterintuitive until you understand the fundamental difference between what we casually call multitasking and the actual psychological trait of polychronicity. Okay, break that down for me. This is where the literature is incredibly precise, and it answers your question. What's fascinating here is the rigid distinction between a simple behavior and a deep-seated personality trait. So multitasking is just the behavior? Yes. Multitasking is merely a behavior. It is the actual physical or cognitive act of doing two or more things simultaneously. And anyone can do that, technically. Exactly. Anyone can be forced to multitask. If your boss demands that you answer the phone while typing an email and waving to a customer, you will do it just to survive the shift. Right, but you might hate every second of it. Exactly. Yeah. You are doing it, but it's draining you. But polychronicity is a stable personality trait. It is an internal psychological preference. So it's not just doing it, it's actually wanting to do it. Yes. It is the deep-seated belief that juggling tasks is the absolute best, most comfortable, and most effective way to exist in the workplace. So it's kind of like the difference between forcing someone to eat at a chaotic, loud, all-you-can-eat buffet, because it's literally the only restaurant open in town. Like where you're going with this. Versus someone who actively chooses the buffet every single time because they genuinely love sampling 10 different dishes simultaneously. Yes, that is a fantastic analogy. Because the neurotypical person who prefers sequential tasks, they might survive the buffet, but they leave feeling stressed, exhausted, and totally overstimulated. They need a nap afterward. Right. But the polychronic person leaves the buffet feeling energized. They crave that exact environment. That is a perfect way of understanding the mechanism at play here. Because a hotel front desk is inherently a high-speed, unpredictable environment. It's the ultimate buffet of tasks. Exactly. So a highly polychronic individual does not view the ringing phone, the angry guest, and the radio chatter as annoying interruptions to their work. How do they view them? They view those things as the natural, essential components of their workflow. It is their baseline. This preference is what the literature refers to as a stable, time-oriented characteristic. They just process time differently than the rest of us. And this brings us to the concept of thriving at work, which is the actual outcome the researchers are trying to measure here. Yes, thriving is the dependent variable. Now, when we use the word thriving in just a casual conversation, we usually just mean someone is doing really well, like maybe they got a promotion or they just seem happy. Right, it's used very loosely in corporate speak. But in organizational psychology, thriving is not a vague compliment. It has a very rigid, specific architecture, doesn't it? It absolutely does. The concept of thriving, which was heavily developed by scholars like Gretchen Spreitzer, involves two distinct but inherently intertwined components. Okay, what are they? Vitality and learning. Vitality is the affective component. It is the emotional and physical sensation of feeling alive, energized, and passionate about what you are doing. Like having a full battery. Exactly. And learning is the cognitive component. It is the psychological sense that you are continuously acquiring and applying new skills and knowledge. So you need both to actually be thriving. Yes. To truly thrive, according to the literature, you must have both simultaneously. If you are learning but you are exhausted, you are just surviving a tough program. And if you are energized but stagnant, you are just comfortable. You aren't growing. Right. Thriving requires both the energy and the growth together. And this specific paper focuses entirely on the learning facet of that equation. Why did they isolate learning? Well, the authors argue that the learning facet acts as a crucial internal gauge for an employee.
Like a dashboard metric for their own career? Yes. Yeah. It is the metric by which an individual internally evaluates whether they are actually moving forward in their career and their life. So if you are learning new ways to handle difficult guests or mastering a new booking system on the fly, you experience a psychological sensation of personal growth. Exactly. On a core level, that you are not stagnating. And this is particularly vital in the context of the hospitality industry post-COVID-19. Oh, yeah. That industry was just decimated. It was. So many of these workers spent years in a state of deep stagnation, what organizational psychologists term languishing. They were stuck at home or in empty hotels. So understanding how to reignite that learning and growth is paramount for bringing the industry back to life. Precisely. It's about getting them out of languishing and back into thriving. I think we also need to draw a hard line here between polychronicity and some of the other corporate buzzwords that get thrown around in performance reviews. Oh, absolutely. The terminology gets very muddy in HR departments. Right, because I can easily imagine someone listening to this and thinking, oh, I know what you mean. A polychronic person is just a really proactive employee or someone who is highly adaptable. And that is a very common misconception. But the academic literature treats those as completely separate animals, right? They are fundamentally distinct constructs, and honestly, mixing them up is how organizations make massive scheduling errors. Okay, so let's look at proactive personality first. How is that different? Well, a proactive person is someone who takes deliberate initiative to affect change in their environment. They identify a problem, and they move to fix it to secure a better future outcome. They are a problem solver. Yes, but, and this is key, a highly proactive person might strongly, even violently prefer to execute their visionary plans sequentially. Oh, I see. They might want to do step 1, finish it perfectly, move to step 2, finish it perfectly. Exactly. They might absolutely despise multitasking. Yeah. Polychronicity has nothing to do with wanting to change the environment. It is strictly about how time and tasks are organized and experienced. Okay, that makes sense. What about adaptability? Because someone who seamlessly bounces between a ringing phone and a frustrated guest looks incredibly adaptable to an observer. They definitely do look adaptable, but the underlying psychological driver is different. How so? Adaptability is an employee's capacity to modify their behavior in response to evolving, often stressful workplace conditions. It is reactive flexibility. So it's about surviving a change in the environment. Yes, polychronic employees look adaptable because they handle the multitasking chaos well, but adaptability is about surviving change, whether that change involves a single task or multiple tasks. So adaptability is a response, but polychronicity is a preference. Perfectly said. Polychronicity is a pure inherent preference for multiplicity. A highly adaptable person can survive the chaos. A polychronic person demands it. Okay, so we have really isolated our subject here. We have this unique individual, the polychron, who loves the buffet of tasks, working in an environment that serves up chaos all day. A perfect match. Let's dive into the core theoretical mechanism of how this juggling actually results in them thriving and learning. Right. The underlying theory. The authors build their entire argument on a foundation called the socially embedded model of thriving. Yes, that is the theoretical framework for the whole study. So if we strip away the dense academic terminology, what is this model actually explaining to us about human behavior at work? The socially embedded model of thriving, which was originally proposed back in 2005, presents a very elegant, almost philosophical idea about the workplace. Okay, what's the idea? It argues that your ability to thrive does not depend solely on who you are inside, nor does it depend solely on the external environment where you work. So it's not just you and it's not just the office. Right. It is the intricate, dynamic interplay between the two. Thriving is produced when individual characteristics like your personality, dispositions, and traits interact perfectly with contextual factors. Contextual factors like the social climate or the physical layout or the organizational systems. Exactly. So it's really the classic nature meets nurture formula, but applied specifically to corporate productivity. Precisely. Yeah. And the genius of what the authors of this specific paper have done is that they took this highly specific trait, polychronicity, and slotted it perfectly into this model as a vital individual characteristic. Hasn't that been done before? Not like this.
Historically, researchers using this model focused on very broad, overarching personality traits, things like general positive affect or core self-evaluation. Really broad strokes. Yes. By introducing polychronicity, they brought a razor-sharp, time-oriented trait into the framework, which is infinitely more relevant to the fast-paced, minute-by-minute reality of a hotel front desk. That is so smart, and this really sets up their first major hypothesis. Yes, it lays the groundwork perfectly. And just to be clear for everyone, when we look at these academic papers, a hypothesis is basically the educated, theoretically backed prediction that the researchers are setting out to prove with hard data. Yes, it's what they're trying to test. So, hypothesis 1A suggests that polychronicity is positively associated with the learning facet of thriving at work. Right. And hypothesis 1B suggests it is positively associated with work engagement. And if you follow the underlying logic of the socially embedded model we just talked about, this makes perfect sense. Walk us through the causality there. Let's look at it practically. If your brain is naturally wired to love doing 5 things at once, and you are hired to work at a busy reception desk where you are fundamentally required to do 5 things at once, you achieve a profound state of person-environment fit. The nature completely matches the nurture. Exactly. You don't feel overwhelmed, you feel invigorated. This innate psychological preference allows you to efficiently allocate your time and manage diverse responsibilities without suffering the cognitive penalty that a sequential worker would suffer. Because the sequential worker is burning all their mental energy just trying to survive the stress. Yes, and crucially, because the polychronic worker isn't burning energy on survival, they have surplus cognitive bandwidth available. And what do they do with that surplus bandwidth? They use it to acquire new skills. They are learning because they are perfectly adapted to the ecosystem. But here is where the paper completely flips the script on traditional management theory. Let's look at work engagement for a second. This is a major pivot in the literature. Right. Because in the corporate world, if you ask literally any executive, they will tell you that work engagement is the final destination. It's the holy grail of HR. Exactly. You hire someone, you treat them well, you give them good benefits, and the finish line you cross is a happy, engaged employee. Once they are engaged, the HR department gives themselves a high five and goes home. That is the standard narrative. But this paper argues that engagement isn't the finish line at all, does it? It absolutely challenges that paradigm. This is a major theoretical contribution of the research. Hypothesis 2 proposes that work engagement is actually the mediator between the trait of polychronicity and the outcome of thriving. Okay, so, to use an analogy, engagement isn't the destination at the end of the road. Engagement is the engine of the car. That is exactly right. Work engagement in the academic literature is defined as a positive, fulfilling, work-related state of mind that is characterized by 3 specific things: vigor, dedication, and absorption. So it is not just being happy with your paycheck? No, it is a profound motivational state. When polychronic employees are allowed to juggle tasks the way their brains prefer, they become highly absorbed. They enter a psychological state of flow. They just lose track of time because they're so dialed in. Exactly. They feel dedication and vigor because their deepest psychological needs are matching their daily physical reality. And because they are in that intense state of vigorous flow, they soak up new information. Like, they notice the micro expressions on a difficult customer's face and learn how to de-escalate. Yes, or they figure out a shortcut in the booking software while they're talking on the phone. That is the causal link right there. The deep, emotional, and energetic connection to the work the engagement propels them to seek out opportunities for skill enhancement. The state of engagement causes the learning behavior. And this directly challenges several recent massive reviews in the literature that treated engagement merely as a proximal attitudinal outcome. Basically lumping it in with basic job satisfaction. Yes. This paper provides the empirical backing to say, no, engagement is an active, motivational pathway that actively drives human growth. Okay, so up to this point, we have this beautifully functioning ecosystem. You have a polychronic employee who loves chaos. The hotel provides an endless buffet of chaos. Everyone happy? The employee gets deeply engaged, enters a state of flow, and uses that surplus cognitive energy to learn new skills, which means they are thriving. It sounds like a perfect self-sustaining loop. It does, but we have to introduce the boundary condition. Yes, we have to talk about the dark side of management intentions. Right. In statistical modeling, a boundary condition is explored through what we call a moderator. Okay, explain what a moderator does in this context. A moderator is a third variable that enters the equation and fundamentally changes the strength or even the direction
of the relationship between two other variables. Like throwing a wrench in the gears. Yes. And in this study, the moderator is formal training. And this is the part that is so incredibly counterintuitive. Because in human resources, training is universally, unconditionally viewed as the ultimate good. It's treated as a silver bullet for performance. The prevailing theory, I think it's called the dynamic transfer model, basically dictates that training is the essential vehicle for transferring knowledge, skills, and abilities to your staff. That's the established logic, yes. It's meant to empower people. It is the ultimate investment in your team. But this paper looks at hypotheses 3 and 4 and says, hold on, formal training can actually harm the engagement of highly polychronic employees. This raises an incredibly important question about the blind spots in how we design human resource practices. What's the blind spot? Well, when organizations design these massive training programs, they are usually focused solely on maximizing human capital. The logic is, we will pour these specific skills into an employee's head to make them more efficient. Right, treating them like a hard drive you just download data into. Exactly. Yeah. But when they do that without looking at the employee's well-being or their natural cognitive working style, that exact training becomes a burden. It becomes a major stressor. Walk me through the actual psychological mechanism there. Why does my superstar multitasking front desk manager suddenly disengage and shut down when I send them to a 2-day training seminar to learn the new VIP protocol? Consider the actual environmental reality of what formal training usually entails in a corporate setting. Okay, usually a conference room, bad coffee, lots of PowerPoint slides. Exactly. Yeah. It is almost always highly structured, it is sequential, it is rigid, and crucially, it takes the employee entirely away from the active dynamic floor. Right, you are literally removing them from their natural habitat. Yes. It demands that they sit in a quiet room or stare at a computer module focusing on one single, highly structured linear task for hours at a time. Which goes against everything their brain wants to do. It often extends their work hours, or it completely detaches them from the vibrant, multifaceted environment where their brain actually feels comfortable and stimulated. You know, it feels like taking a jazz musician, right? Oh, I like that analogy. Like someone who fundamentally thrives on improvisation. They read the room, they play off the subtle energy of the crowd, they lock eyes with the bassist and change the tempo on a dime. Exactly. They draw their energy from that chaotic, multi-layered feedback loop. Right. And then management comes in and says, hey, we want to make you a better musician. We're going to lock you alone in a sterile, soundproof room for 8 hours a day and force you to play basic, rigid, sequential scales over and over. That is exactly what it feels like to them. You aren't just boring them. You are literally starving their brain of its primary psychological fuel source. The training acts as an energy vampire. Yes. Instead of making them better, you completely destroy their passion for the music. That is the exact mechanism. For a highly polychronic person, being pulled out of the fluid chaos of the hotel floor for rigid, time-consuming formal training feels like a profound misuse of their time and energy. It doesn't feel empowering at all. It feels incredibly resource depleting. It depletes their cognitive and emotional reserves, leading to acute frustration and eventual burnout. So the training acts as a wedge that actually breaks the bridge we talked about earlier. The engagement bridge. Exactly. It drastically reduces their work engagement. And because the engagement engine is shut off, it cuts off their learning and stops them from thriving. That is a staggering realization for any manager. To realize that the exact tool you bought to build your employees up is the specific weapon destroying your most naturally talented staff. It is a bitter pill for HR departments to swallow. It's wild. But if you are going to make a claim, that bold a claim, that basically tells the entire hospitality industry that their million-dollar training programs might be actively backfiring, you need bulletproof evidence. You absolutely do. You can't just base that on a hunch. Which brings us to the methodology. Let's pull back the curtain on the research design, because they didn't just casually interview 5 people in a coffee shop. No, the research design deployed here is incredibly robust and meticulously planned to trap the truth. Tell us about the sample. They conducted a multi-wave field study involving 261 full-time frontline employees and, critically, their coworkers, drawn from 10 different 4-star hotels located in Ghana. Let's contextualize this before we get into the math. Why Ghana, and why strictly 4-star hotels? Ghana is a particularly fascinating context for this.
It is a fast-rising, developing economy where the hospitality and tourism sector forms a massive structural pillar of the national economy. So it's a very serious, high-stakes industry there. Very much so. However, following the COVID-19 pandemic, that industry experienced catastrophic disruptions. As it did globally, yeah. Right. Border closures, travel bans, and lockdowns meant that many of these hospitality workers spent months, if not years, in a severe state of languishing. They had no guests, no chaos, no complex tasks to juggle. They were completely stripped of their natural environment. So, studying how these specific employees adapt, re-engage, and attempt to thrive as the industry violently returns to high-speed normalcy provides an incredibly high-stakes, real-world laboratory to test this theory. It's a pressure cooker environment, perfect for the study. Exactly. And I noticed they specifically deliberately excluded part-time workers from their data set. They only looked at full-time staff. Why cut out such a large portion of the workforce? It fundamentally comes down to controlling for contaminating variables in the data. Okay, what do you mean by contaminating variables? Past organizational research clearly indicates that part-time employees often seek out flexible work arrangements because they are actively balancing other major time-consuming life commitments. Like university degrees or caregiving or maybe a second job? Exactly. Because their lives are already heavily segmented, their preference for part-time work might artificially influence or distort their survey responses regarding time usage and task management. So their polychronicity might be context dependent. Right. Full-time employees, however, are fully immersed in the organizational culture and the daily unrelenting demands of the hotel floor. They provide a much purer, uncontaminated data set for evaluating natural polychronic inclinations within a professional setting. Now let's unpack the really elegant part of their methodology, because this is where the paper really earns its A-star rating. The multi-wave design. It's beautiful. Yes. When you run a survey in human resources or psychology, there is always this massive, glaring elephant in the room called common method bias. The bane of organizational researchers everywhere. Right. Let's explain this simply for anyone who hasn't run a study before. If I'm a researcher and I walk up to an employee on a Tuesday afternoon and hand them a piece of paper that asks, do you like to juggle tasks? Are you highly engaged in your job? And are you learning and thriving at work? Human nature is going to take over. Exactly. Human nature dictates that the employee is going to want to look like a superstar. They are going to rate themselves a 5 out of 5 on everything, not necessarily because it is the objective truth, but because they are filling out a single survey on a single day and they want to project competence. Exactly. And statistically, if the exact same person answers all the predictor questions and all the outcome questions at the exact same time, using the exact same survey instrument, the mathematical correlations between their answers might be massively artificially inflated. Like, if they are in a good mood, they score high on everything. Or if they had a fight with their boss that morning, they score low on everything. That artificial inflation is common method bias. And it threatens the internal validity of the entire study. It makes the data untrustworthy. It does. So how did this specific research team solve that? Because the way they cornered the data is brilliant. They utilized what is known in the field as a multi-wave, multi-source design. They didn't ask all the questions at once, and crucially, they didn't ask only the employee. Okay, so they split it up. Yes, they broke the data collection into 3 distinct, separated time periods with a full month lag between each wave. Put us in the shoes of the hotel worker for a second. Walk us through exactly what this timeline looked like on the ground. Imagine it is time 1, which was June 2023. The researchers approach 350 frontline hotel employees. In this first wave, they give them a survey, but they strictly limit the questions. What did they ask? They only ask the employees to rate their own inherent level of polychronicity, their personal preference for multitasking, and they ask for their perception of the volume of formal training they're required to do at the hotel. That is it. Okay, so time 1 is just establishing the baseline personality trait and their view of the training environment. Nothing about outcomes. Correct. Then the researchers walk away and wait a full month. A whole month? Yes. In time 2, which is July 2023, they return only to the employees who successfully completed the first survey. This time, they hand them a new survey, but they ask completely different questions. What's on the July survey? Now they ask them to rate their current level of work engagement. How absorbed are you in your tasks? How much vigor and dedication are you feeling right now?
And by separating this question by 30 days, they drastically reduce the risk that the employee is just carrying over the exact same mood or cognitive mindset from the first survey. Exactly. It breaks the artificial correlation. And during this Time 2 survey in July, they asked the employees to do something highly unusual. They asked them to hand over the contact details of 2 of their working colleagues. Yes, specifically coworkers with whom they had worked closely, shoulder to shoulder, for at least the past 3 months. And this sets up the brilliant trap of Time 3, which took place another month later in August 2023. Yes, this is where it all comes together. The researchers took those coworker names, randomly selected one of them for each focal employee, and sent a survey to the coworker. They didn't ask the focal employee anything in August. Not a single thing. They asked the coworker to rate the focal employee's actual learning behavior on the floor. That is just incredible methodology. You aren't asking the potentially biased employee, hey, are you learning and thriving? Because they will always say yes. Right. You are asking the person standing 3 feet away from them behind the reception desk, is John actually demonstrating new skills? Is Sarah actually improving her customer service? Are you observing them thrive? This raises such an important question about how we fundamentally evaluate human growth in the workplace. Because self-reporting is flawed. Well, self-reporting is incredibly valuable for measuring internal, invisible states. Yeah. You are the absolute only person on earth who knows if you truly prefer multitasking or if you feel internal vigor. True, a coworker can't read your mind. Exactly. But learning and thriving are externally observable behaviors. By having a close coworker verify the actual thriving behavior in reality, the authors created an incredibly robust, deeply trustworthy set of results. They completely bypass the bias of an employee simply puffing out their chest on a self-evaluation. It's exactly like having an independent referee verify the final score of a game. At the end of this massive 3-month logistical undertaking, you end up with 261 fully matched, complete responses where you have the employee's internal personality trait from June, their internal engagement level from July, and their coworkers' objective observation of their learning behavior from August. It's a beautiful, unbreakable chain of evidence. It represents a very rigorous standard of empirical research. When you see data collected this carefully, you can trust the story it tells. So let's unpack the story the data actually told. When they took all of these surveys from June, July, and August and ran all this data through their statistical modeling software, what did they find? The results were crystal clear. I know the paper is incredibly dense with advanced math, but let's distill the mechanics of it. They mentioned running something called a confirmatory factor analysis, or CFA. We definitely don't need to get bogged down in the advanced algebraic equations, but explaining the purpose of the CFA is important to assure you that the researchers rigorously tested their own tools before declaring victory. What does it actually do? Essentially, confirmatory factor analysis is a mathematical method of proving that the survey questions you asked were actually measuring entirely distinct concepts. Give me an example of how that could go wrong. Well, the conceptual definition of vitality in the thriving metric is very, very similar to the conceptual definition of vigor in the work engagement metric. Ah, they sound almost identical. Right. If the wording of your questions causes those two concepts to overlap too much in the minds of the respondents, your data becomes muddy and compromised. You wouldn't know what you were actually measuring. Exactly. The CFA mathematically proved that the constructs for polychronicity, training, engagement, and learning were completely statistically distinct from one another. So it proves the tools were razor sharp and highly accurate. And once they verified the tools, the actual numbers clearly supported the first 2 hypotheses we discussed. Yes. Polychronicity positively led to work engagement, and work engagement actively led to learning. That indirect effect was strong and statistically significant. The jazz musician loves the noisy club. Yes, the baseline model works perfectly. But let's look at the training aspect, the boundary condition. To measure how training ruined the engagement, the researchers used something called an interaction plot, specifically a Johnson-Neyman plot. This is such a cool statistical visualization. Walk us through how to visualize this. The Johnson-Neyman plot is a truly fascinating statistical tool because it doesn't just give you a binary yes or no answer about whether a relationship exists. It's not just a pass-fail. No, it maps out a landscape and shows you the exact, precise mathematical point where a relationship changes or dies. Okay, so imagine a graph. Yes, imagine a graph. When they mapped out the data from the hotel workers,
They found that the natural trait of polychronicity is only significantly associated with high work engagement when the employee perceives the burden of formal training as relatively low. Wait, perceived as low or perceived as negative? Perceived as low enough that it is not viewed as a negative resource-depleting burden. So a little training is fine. Right. But as you walk to the right on the graph, as the volume and rigidness of the formal training increases, you can physically watch the line representing work engagement drop. It just plummets. Yes. If the training demands cross a certain mathematical threshold on the Johnson-Neyman plot, the positive effect of polychronicity on work engagement is drastically attenuated. It is weakened so severely that it becomes statistically insignificant. It drops to zero. Precisely. So if you hit your superstar juggler with too much formal sequential training, their superpower just evaporates. The engagement engine stalls out, and the coworker standing next to them in time 3 reports that they have completely stopped learning anything new on the floor. The heavy burden of the rigid training completely neutralizes the immense benefit of the personality trait. So as a practitioner looking at this data, it almost feels like a giant flashing warning label on the cover of an HR manual. It absolutely should be a warning label. Do we just burn the manual? Do we stop training these people entirely? Do we just throw them to the wolves of the chaotic hotel lobby and let them figure it out on their own because training will ruin them? It's crucial to impartially report that the authors are absolutely not advocating for the elimination of training. Knowledge transfer remains essential for any organization. Right. You have to teach people the new software or the new safety protocols. Exactly. It is not about stopping training, but rather recognizing the profound dark side of high-performance human resource practices when they're applied blindly and uniformly across a cognitively diverse workforce. The warning label isn't "do not train." The warning label is "one-size-fits-all training will destroy your best jugglers." That is a phenomenal, nuanced distinction, and it really reshapes how we need to think about human capital development. So let's start pulling all of these threads together into our final key takeaways. Let's summarize the impact. For the academics listening to this, for the scholars and the PhD students who might be watching those AOM SIM-Bytes videos and trying to figure out how to structure their own future research, what does this paper fundamentally change in the existing literature? For the academic community, there are two major structural takeaways from this research. First, the paper successfully and significantly extends the socially embedded model of thriving. The nature meets nurture model. Right. Historically, the literature utilizing this specific model has relied on broad, overarching personality traits, things like core self-evaluation or emotional stability. And this paper changes that. Yes, it conclusively proves that a highly specific, time-oriented trait like polychronicity is a powerful, active antecedent to thriving in fast-paced environments. It adds a fresh, highly relevant, and highly specific variable to the theoretical model. It basically updates the vintage model for the reality of modern, high-speed, fractured work environments. Exactly. The second major theoretical contribution is how this paper brilliantly resolves the conceptual muddling around the idea of work engagement. Right, getting it out of the job satisfaction bucket. Yes. In recent years, several major academic reviews have lazily categorized work engagement merely as an attitudinal outcome, grouping it in the exact same bucket as basic job satisfaction or organizational commitment. Treating it like the finish line again. Right. By proving empirically that work engagement actually operates as a mediator, the active roaring engine driving the acquisition of new skills, this paper aggressively challenges that passive categorization. It reestablishes engagement as a dynamic, motivational pathway, rather than just a happy end state. It's a very important distinction for future researchers to understand. And what about for the actual practitioners, for the hotel general managers, the HR directors, the people actually sitting in an office right now trying to write the schedules for next week? For practitioners on the ground, the first mandate from this data is simple recognition. You need to actively recognize and leverage the natural polychronic tendencies of your frontline staff. How do they actually do that? When you are hiring, or when you are scheduling shifts, if you identify someone who naturally prefers to juggle, put them directly in the center of the storm. Let them run the busiest desk during the busiest check-in window. Yes. Do not force them into quiet, sequential, single-task back-office work. They will languish and wither there. Let them thrive in the chaos that they naturally crave. And what is the second mandate for management? You have to critically reevaluate your training approaches.
You cannot let extensive, rigid skill training become a resource-depleting burden. Because it kills the engine. Exactly. Yeah. If you know you have a highly polychronic employee, sending them to a mandatory 3-day sequestered training seminar in a windowless conference room might literally destroy their momentum. So how do you train them then? You need to customize the delivery of your training to align with their individual cognitive work preferences. Provide alternative, flexible learning pathways. What does that look like practically? Maybe that looks like on-the-job microlearning, where they learn a skill for 10 minutes and immediately apply it on the floor, or modular training that they can dip in and out of while remaining on the active floor. You have to ensure your well-intentioned developmental tools aren't actively extinguishing their natural engagement. It's entirely about preserving the jazz musician's inherent love for the music while still teaching them the new song. Now, no paper is perfect, and every good piece of research opens the door for a dozen more questions. What are some curious avenues for future research that build on this study's findings and its limitations? One of the most fascinating questions this raises involves the rapidly changing nature of work itself. This study specifically looked at frontline hotel workers who are physically trapped in their chaotic environment. Right, they can't exactly work from home. No. But what happens to polychronic employees with the massive rise of remote and hybrid work? When you engage in telework or virtual team environments, you often have the immense autonomy to engage in job crafting. Job crafting. Yes, which is the act of designing your own daily work setup. Oh, that is a fascinating twist. If a highly polychronic person is working from their own living room, do they accidentally job craft away the very chaos they need to thrive? It's very possible. Like, do they isolate themselves into a quiet, heavily structured, sequential workflow because they think that's what good working from home looks like? And then end up absolutely miserable because they fixed the chaos they actually psychologically craved. It is a highly plausible, almost tragic scenario that desperately demands empirical investigation. How does the polychron survive the quiet of the home office? Furthermore, this paper focused specifically on the learning facet of thriving. Future research could easily expand this framework to look at employee ambidexterity. And just to clarify, we mean ambidexterity in a strategic business sense, not just writing with both your left and right hands. Right. Organizational or individual ambidexterity is the cognitive ability to simultaneously explore entirely new ideas and innovations, while also exploiting and optimizing existing routines and protocols. Okay, so doing the old thing perfectly while inventing the new thing. Exactly. Given that polychronic individuals already inherently juggle multiple operational tasks with ease, are they uniquely neurologically suited to be individually ambidextrous? Can they optimize a standard check-in procedure while simultaneously inventing a brand new customer service protocol in their head? That seems like the most natural, exciting evolution of this line of research. And beyond the nature of work, we also have to consider the massive impact of culture. Definitely. We have to remember that this study was firmly rooted in Ghana, focusing exclusively on 4-star hotels. Right. How might deep cultural differences across other African subregions or in heavily westernized contexts, or even just shifting the context to non-star budget hotels, change how training is perceived? Because cultural norms dictate so much of how we view work. Exactly. The cultural perception of authority, the societal value placed on formal classroom education versus on-the-job street smarts. All of these deeply ingrained cultural factors could shift that Johnson-Neyman interaction plot significantly. The line might break at a completely different point in a different country. It just shows exactly how rich and untapped this vein of organizational psychology really is. There is so much more to uncover about how our brains actually interact with our jobs. As we wrap up this discussion, I want to turn the focus directly back to you listening to this right now. We've spent a lot of time talking about hotel front desks and formal HR training programs in Ghana, but the underlying psychology of polychronicity and resource depletion applies everywhere. It applies to your office, your remote work setup, and your life. Consider your own daily routine. Consider your own natural cognitive working style. And crucially, look closely at the helpful systems your organization has put in place to manage you. It is a necessary exercise in deep self-reflection for anyone navigating a modern career. Look at the software tracking systems, the mandatory professional development modules, the rigid sequential meeting structures, are the very tools that were designed to make you better and more efficient. Actually, the specific things draining your natural energy. A really important question to ask. As you step into your work this week, take a quiet moment to evaluate your environment. Ask yourself honestly,
Are you being allowed to juggle the way your brain inherently prefers? Or is someone with the best of intentions forcing you to drop the balls? Thank you so much for spending your time with us today and for exploring the incredible nuances of human behavior, cognitive preference, and organizational design. We deeply appreciate you pulling up a chair and being part of this conversation. Until next time, take care of yourselves, evaluate your environment, and we will be right here waiting with another stack of research to unpack. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটা খুব ব্যস্ত হোটেলের লবির দৃশ্য একটু কল্পনা করা যাক। মানে ধরুন চারপাশের পরিবেশ রীতিমতো সরগরম আর কি। হ্যাঁ, মানে যেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। একদম তাই। একজন রিসেপশনিস্ট হয়তো একই সাথে একজন নতুন অতিথিকে চেক ইন করাচ্ছেন, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বাজতে থাকা টেলিফোনের উত্তর দিচ্ছেন। আবার হয়তো চোখের ইশারায় একজন বেলবয়কে অতিথির লাগেজ নিয়ে যাওয়ার নির্দেশনাও দিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো তিনি কোনো ধরনের বিরক্তি ছাড়াই এই পুরো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিটি দারুণ উপভোগ করছেন। আর এখানে আসলে একটা খুব চমকপ্রদ মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে। বিজ্ঞানীদের ভাষায় এই স্বভাবটিকে বলা হয় পলিক্রনিসিটি, বা একসঙ্গে একাধিক কাজ করার প্রতি এক ধরনের স্বাভাবিক আকর্ষণ। হ্যাঁ, তো আজকের এই আলোচনায় আমরা দেখব কেন এই ধরনের হাসি খুশি আর চটপটে একজন কর্মকে যদি প্রথাগত ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণের জন্য কোনো শ্রেণীকক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা তার কাজের মান তো বাড়াইলা, বরং উল্টো তার স্বাভাবিক শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে। বিষয়টা কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে সাধারণ ম্যানেজমেন্ট ধারণার একেবারেই বিপরীত, তাই না? মানে আমরা তো সবসময় ধরে নিই যে ট্রেনিং মানেই কর্মীর উন্নতি। ঠিক, কিন্তু এই বিশেষ স্বভাবের মানুষদের ক্ষেত্রে পুরো সমীকরণটাই একদম আলাদা। আর এই সমীকরণটাই আজ আমরা ভেঙে বোঝার চেষ্টা করব। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে আমাদের শ্রোতাদের জন্য খুব দ্রুত কয়েকটি জরুরি তথ্য জানিয়ে রাখি। হ্যাঁ, অবশ্যই। আজকের এই পুরো আলোচনাটি দাঁড়িয়ে আছে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণাপত্রের উপর, যা প্রকাশিত হয়েছে মর্যাদাপূর্ণ জার্নাল অফ অকুপেশনাল অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে, যেটা কিন্তু একাডেমিক দুনিয়ায় অত্যন্ত পরিচিত। মানে এটি একটি ABDC-A তালিকাভুক্ত জার্নাল। একদম। আর এই চমৎকার গবেষণাটি পরিচালনা করেছেন কেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিজনেস কলেজের মাইকেল আসিয়েদু জিয়েনসারে আর মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যামিসোলা সোয়েটান। এর সাথে ছিলেন কিংস কলেজ লন্ডনের চিডিবেরে ওগবোনায়া এবং জোন-আর্ক আgyapong, যিনি কেপ কোস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেও যুক্ত আছেন। হ্যাঁ, আর সারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছিলেন হামিদ রুদবাড়ি। তো শ্রোতারা যারা শুনছেন তাদের উদ্দেশ্যে আরেকটি ছোট বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো। হ্যাঁ, ওই আমাদের নতুন শিডিউলের বিষয়টা ঠিক ধরেছেন। মানে মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই আয়োজনটি প্রতি সপ্তাহের রবিবার এবং সোমবার প্রচারিত হচ্ছে। রবিবারে আমরা সাধারণত ক্লাসিক গবেষণাপত্র বা বই নিয়ে কথা বলি, আর সোমবারে নজর রাখি শীর্ষস্থানীয় জার্নালগুলোর নতুন প্রকাশনার দিকে। আমাদের যারা নিয়মিত শ্রোতা তাদের এই নিরন্তর সমর্থনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকেই হয়তো ভাবেন আমরা কেন প্রতিদিন পর্ব প্রকাশ করি না। এর পেছনে আসলে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। আমরা যে AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কন্টেন্ট তৈরি করি, তার ব্যাকএন্ড ডেটা সেন্টারগুলো ঠান্ডা রাখতে প্রচুর পরিমাণে পানির প্রয়োজন হয়। মানে এটা প্রকৃতি ও জলবায়ুর উপর একটা অদৃশ্য কিন্তু বিশাল চাপ ফেলে আর কি। একদম তাই। তাই আমাদের আলোচনার মান ও গভীরতা অক্ষুণ্ণ রেখে সাপ্তাহিক রিলিজ সীমিত করা মূলত জলবায়ু পরিবর্তন রোধের উদ্যোগে আমাদের একটি ছোট কিন্তু সচেতন প্রয়াস। প্রকৃতির প্রতি এই দায়িত্ববোধটুকু আসলে সবারই থাকা উচিত। আর একাডেমিক এবং ম্যানেজমেন্ট দুনিয়ার আরেকটি দারুণ খবর আমি এখানে যোগ করতে চাই। একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর সিম ডিভিশন সম্প্রতি নীরবে AOM SIM-Bytes নামে একটি নতুন মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে। ও হ্যাঁ, এটা তো জুন 2026 থেকে শুরু হলো, তাই না? একদম ঠিক। এই উদ্যোগে মূলত নতুন গবেষক এবং PhD শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির সিনিয়র স্কলারদের তৈরি করা রিল স্টাইলের ছোট ছোট শিক্ষামূলক ভিডিও প্রকাশ করা হচ্ছে। আর দারুণ ব্যাপার হলো
প্রথম ইউটিউব শর্টটি করেছেন স্বয়ং প্রফেসর এড ফ্রিম্যান, যাকে আমরা স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক বলে জানি। এই উদ্যোগটির নেতৃত্ব দিচ্ছে সোশ্যাল ইস্যুজ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বা সিম কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট কমিটি। আর আমাদের প্রডিউসার নিজেও কিন্তু এই কমিটির একজন সদস্য হিসাবে গত 1 বছর ধরে এই উদ্যোগের কন্টেন্ট ডিজাইন নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করছেন। হ্যাঁ, প্রফেসর শেলডন সিমনুয়েলা, মানে যিনি ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির, তার মস্তিষ্কপ্রসূত এই উদ্যোগটি এখন এগিয়ে নিচ্ছেন কমিটির চেয়ারপারসন শিকাগোর লয়োলা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন। যারা আগ্রহী তাদের জন্য AOM SIM-Bytes-এর লিঙ্ক আমাদের শো নোটে দেওয়া আছে। পাশাপাশি আমি শ্রোতাদের বিনীত অনুরোধ করব সময় বের করে অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি আজকের এই কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা মূল প্রবন্ধটি পড়ার জন্য। এটার লিঙ্কও শো নোটে পেয়ে যাবেন। তো চলুন আবার আমাদের সেই হোটেলের লবিতে ফিরে যাই। যারা গবেষণার জগতে একেবারে নতুন এবং নিজেদের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তাদের জন্য যদি আমি পুরো গবেষণাপত্রটির একটি সহজ সারসংক্ষেপ টানি, তবে বিষয়টা দাঁড়ায় এমন। বলুন। ঘানার 10টি 4 তারা হোটেলের 261 জন ফ্রন্টলাইন কর্মী এবং তাদের সহকর্মীদের ওপর এই স্টাডিটি করা হয়। গবেষকরা দেখতে চেয়েছেন যে কর্মীরা একসঙ্গে অনেক কাজ করতে পছন্দ করেন, তারা কর্মক্ষেত্রে কিভাবে নতুন জিনিস শেখেন বা নিজেদের বিকশিত করেন, যাকে থ্রাইভিং বলা হচ্ছে আর কি। ও আচ্ছা, তো ফলাফল কি দাঁড়ালো? গবেষণায় খুব স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে এই পলিক্রনিক স্বভাব কর্মীদের কাজের প্রতি নিবেদন বা ওয়ার্ক এনগেজমেন্ট বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। কিন্তু ওই যে মোড় ঘোরানো বিষয়টা। হ্যাঁ, গল্পে মোড় আসে ঠিক তখনই যখন প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের উপর অতিরিক্ত ফর্মাল বা প্রথাগত ট্রেনিংয়ের চাপ চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই ট্রেনিং তাদের শেখার গতিকে ত্বরান্বিত করার বদলে উল্টো ব্যাহত করে। আচ্ছা, আমি এই বিষয়টা একটু ভেঙে বুঝতে চাই। ধরুন একজন শেফ রেস্টুরেন্ট রান্নাঘরে কাজ করছেন, তিনি হয়তো একসাথে চুলায় স্যুপ নাড়ছেন, অন্যদিকে ওভেনে রোস্ট বসিয়েছেন, আর সেই ফাঁকে সবজি কাটছেন। দারুণ উদাহরণ। তো তিনি এই একসাথে 5টি ভিন্ন পদের রান্না করতে ভালোবাসেন। এখন এই যে তার পছন্দ, এটা তাকে নতুন কোনো রান্নার কৌশল শিখতে কিভাবে সাহায্য করছে? শেফের এই উপমাটা আসলে পরিস্থিতি বোঝার জন্য দারুণ। এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো মাল্টিটাস্কিং আর পলিক্রনিসিটি এক জিনিস নয়। তাই নাকি? মানে পার্থক্যটা কোথায়? পার্থক্যটা হলো মাল্টিটাস্কিং হলো একটা দক্ষতা, মানে কেউ একসাথে অনেক কাজ করতে পারে কিনা, আর পলিক্রনিসিটি হলো একটা মানসিক প্রবণতা বা পছন্দ। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। কেউ হয়তো একসাথে অনেক কাজ করতে পারে, কিন্তু সেটা করতে গিয়ে সে ভেতরে ভেতরে ভীষণ বিরক্ত হয় বা হাঁপিয়ে ওঠে। অন্যদিকে একজন পলিক্রনিক মানুষ এই বিশৃঙ্খলাটার মধ্যেই নিজের আরাম বা কমফোর্ট জোন খুঁজে পায়। তারা এই দ্রুতগতির পরিবেশটাকে রীতিমতো উপভোগ করে। তার মানে এটা অনেকটা এমন যে কেউ পাহাড়ে চড়তে ভালোবাসে বলে তার কাছে ট্রেকিং করাটা কোনো কষ্ট নয়, বরং একটা অ্যাডভেঞ্চার। ঠিক তাই, একদম। এই গবেষণাপত্রটি সোশ্যালি এমবেডেড মডেল অফ থ্রাইভিংয়ের তত্ত্ব ব্যবহার করেছে। এর সহজ অর্থ হলো আপনার ব্যক্তিগত স্বভাব যখন আপনার কাজের পরিবেশের সাথে পুরোপুরি মিলে যায়, তখন আপনি সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেন, তাই তো? একদম। হোটেলের ফ্রন্ট ডেস্ক বা রেস্টুরেন্টের রান্নাঘর, এই জায়গাগুলো প্রাকৃতিকভাবেই খুব দ্রুতগতির এবং আনপ্রেডিক্টেবল। প্রতি মুহূর্তে নতুন সমস্যা এসে হাজির হয়। হ্যাঁ, তা তো বটেই। একজন পলিক্রনিক কর্মী যখন এই পরিবেশে কাজ করেন, তখন তার চারপাশের এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি তার কাছে একটা খেলার মাঠের মতো মনে হয়। তিনি এই চ্যালেঞ্জগুলো সামলাতে সামলাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নতুন কৌশল শিখে ফেলেন। মানে হয়তো একজন রাগী গেস্টকে সামলানোর নতুন কোনো উপায়ে তিনি কাজের ফাঁকে আয়ত্ত করে ফেলছেন, যা তাকে কোনো বই পড়ে শিখতে হয়নি। ঠিক তাই। কিন্তু এখানে আমার মনে একটা খটকা লাগছে আর কি। আমরা তো ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যে একসাথে অনেক কাজ করলে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়, মানে কাজের মান কমে যায়। ব্রেন নাকি একসাথে দুটো কাজ শতভাগ ফোকাস দিয়ে করতে পারে না। এটা খুব কমন একটা ধারণা। তাহলে এই স্বভাবটি কিভাবে একজন কর্মীকে তার কাজের প্রতি আরও বেশি নিবেদিত বা এনগেজড করছে? আপনার এই খটকা লাগাটা খুব স্বাভাবিক, কারণ প্রচলিত মনস্তত্ত্ব আমাদের এটাই শেখায়। কিন্তু ওই যে বললাম, এই নেতিবাচক প্রভাবটা মূলত তাদের ওপর পড়ে যাদের ব্রেন এই আনপ্রেডিক্টেবল বা এলোমেলো পরিবেশ একদম পছন্দ করে না। আচ্ছা। পলিক্রনিক মানুষদের নিউরোলজিক্যাল রেসপন্স বা মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া একটু ভিন্নভাবে কাজ করে। তারা যখন একসাথে অনেকগুলো কাজ সামলায়, তখন তাদের মস্তিষ্ক একটা বিশেষ রিদম বা ছন্দে চলে আসে।
মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা যায় ফ্লো বা সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকার একটা অবস্থা। যখন আপনি ফ্লো বলছেন, এটা কি সেই অনুভূতির মতো যখন আমরা কোনো প্রিয় কাজ করতে গিয়ে এতটা মগ্ন হয়ে যাই যে চারপাশের সময়ের কোনো খেয়ালই থাকে না? একদম সেই অনুভূতিটাই। এই গবেষণায় কাজের প্রতি নিবেদন বা এঙ্গেজমেন্টকে 3টি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: ভিগর বা প্রবল মানসিক উদ্যম, ডেডিকেশন বা কাজের প্রতি গভীর আবেগ, আর অ্যাবজর্পশন বা সম্পূর্ণ নিমগ্নতা। তার মানে একজন পলিক্রনিক রিসেপশনিস্ট যখন একসাথে ফোন ধরছেন, গেস্টের দিকে তাকিয়ে হাসছেন, আবার কিবোর্ডে টাইপ করছেন, তখন তিনি আসলে ক্লান্ত হওয়ার বদলে ভেতর থেকে এক ধরনের মানসিক শক্তি পান। হ্যাঁ, মানে এই বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি এক ধরনের ডোপামিন বা আনন্দ পান বলতে পারেন। আচ্ছা, তার মানে তাদের ব্যাটারি আসলে চার্জ হয় এই ব্যস্ততা থেকেই। ঠিক ধরেছেন। এই ব্যস্ততায় তাদের কাজের প্রতি ডেডিকেশন বা আবেগ বাড়িয়ে দেয়। তারা কাজের ভেতর এতটাই অ্যাবজর্বড হয়ে যান যে আশেপাশের ছোটখাটো বিরক্তি তাদের স্পর্শও করতে পারে না। দারুণ তো। আর যখন একজন মানুষ তার কাজের প্রতি এতটা নিবেদিত থাকে, তখন তার মস্তিষ্ক প্রাকৃতিকভাবেই নতুন তথ্য গ্রহণ করতে বা নতুন দক্ষতা শিখতে অনেক বেশি প্রস্তুত থাকে। মানে পলিক্রনিসিটি সরাসরি কাউকে নতুন কিছু শেখায় না, বরং এটি প্রথমে কর্মীকে তার কাজের পরিবেশের প্রতি মানসিকভাবে আটকে ফেলে বা এঙ্গেজড করে। একদম ঠিক। আর এই গভীর এঙ্গেজমেন্টের ফলেই কর্মী প্রতিদিন কাজ করতে করতে নতুন কিছু শিখে নেয় বা থ্রাইভ করে। এখানে ওয়ার্ক এঙ্গেজমেন্ট মূলত একটা সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। এই বিষয়টা সত্যিও খুব কৌতূহল জাগানিয়া। কারণ যদি কাজের প্রতি এই স্বতঃস্ফূর্ত নিবেদনই শেখার মূল চাবিকাঠি হয়, তবে তো যে কোনো সাধারণ ম্যানেজমেন্ট বা এইচআর টিম ভাববে যে এই কর্মী তো খুব ভালো শিখছে, চলো একে আরও ফর্মাল ট্রেনিং দিই। হ্যাঁ, সাধারণ ধারণা তো সেটাই। ও টুইস্ট বা মোড় তো এখান থেকেই শুরু। আমি যদি বিষয়টা একটা উপমা দিয়ে বলি, ধরুন একজন স্বভাবজাত জ্যাজ মিউজিশিয়ান, তিনি হয়তো কোনো প্রথাগত নিয়ম না মেনেই নিজের মতো করে অসাধারণ সব সুর তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করতে ভালোবাসেন। মানে ইম্প্রোভাইজ করতে পছন্দ করেন আর কি। হ্যাঁ, তিনি এই স্বাধীনতাটা উপভোগ করেন। এখন তাকে যদি হঠাৎ করে একটি কঠোর ক্লাসিক্যাল মিউজিক স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়, যেখানে তাকে বাধ্য করা হবে ঘন্টার পর ঘন্টা শিট মিউজিক পড়ে নিয়ম মেনে সুর তুলতে, তবে কি তার সেই স্বাভাবিক সৃজনশীলতা নষ্ট হয়ে যাবে না? এই গবেষণায় কি ঠিক এরকম কিছুই দেখা গেছে? আপনার জ্যাজ মিউজিশিয়ানের উপমাটা এই গবেষণার মূল বক্তব্যকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। মানে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় একটা খুব পুরনো ধারণা আছে যে ট্রেনিং সবসময় ভালো, যত বেশি ট্রেনিং দেওয়া হবে কর্মীর দক্ষতা তত বাড়বে। হ্যাঁ, এটাই তো সবাই বিশ্বাস করে। কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে সব ওষুধ সব রোগীর জন্য নয়, বুঝলেন? পলিক্রনিক কর্মীদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ এবং কাঠামোগত ট্রেনিং সেশনগুলো আসলে তাদের উপকারের চেয়ে অপকার বেশি করে। কিন্তু কেন? তারা তো এমনিতেই শিখতে আগ্রহী, তাহলে একটা গোছানো ট্রেনিং কেন তাদের জন্য ক্ষতিকর হবে? এর পেছনে মনস্তাত্ত্বিক মেকানিজমটা আসলে কি? মেকানিজমটা লুকিয়ে আছে মানুষের এনার্জি বা মানসিক শক্তির ব্যবহারের উপর। আপনি একটা বাঘের কথা চিন্তা করুন, যে জঙ্গলে স্বাধীনভাবে শিকার করতে ভালোবাসে। তাকে যদি আপনি খাঁচায় বন্দি করে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ম মেনে খাবার দেন, তবে সে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলবে। ও আচ্ছা, মানে পলিক্রনিক কর্মীদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটাই ঘটে? একদম। তারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে চারপাশের পরিবেশ থেকে টুকরো টুকরো তথ্য নিয়ে শিখতে ভালোবাসে। যখন তাদের স্বাভাবিক কাজের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে একটা বদ্ধ কনফারেন্স রুমে ঘন্টার পর ঘন্টা একটানা স্লাইড প্রেজেন্টেশন দেখতে বাধ্য করা হয়, তখন তাদের মানসিক ব্যাটারি ড্রেন হতে শুরু করে। মানে বিজ্ঞান তো একাই বলে যে যখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে জোর করে দমিয়ে রাখি, তখন মস্তিষ্কের প্রচুর এনার্জি খরচ হয়। ঠিক তাই। একজন পলিক্রনিক মানুষ যখন বাধ্য হয়ে একটিমাত্র বোরিং স্লাইডের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তার মস্তিষ্ককে আক্ষরিক অর্থে লড়াই করতে হয় তার মনোযোগ ধরে রাখার জন্য। অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খলা বা মাল্টিটাস্কিং তাদের এনার্জি দিত, সেটা কেড়ে নেওয়ার ফলে তারা উল্টো ক্লান্ত অনুভব করে, আর নিজেদের প্রবৃত্তির সাথে এই যে লড়াই, সেটাই তাদের শক্তি ক্ষয় করে। শুধু ক্লান্তই নয়, তারা এই পুরো ট্রেনিং প্রক্রিয়াটাকে একটা রিসোর্স ডিপ্লিটিং বা শক্তি ক্ষয়কারী বাধা হিসেবে দেখতে শুরু করে। তাদের মাথায় তখন একটা চিন্তাই ঘোরে,
যে এই ট্রেনিংয়ের পেছনে আমি যে সময় আর এনার্জি নষ্ট করছি সেটা দিয়ে তো আমি আমার আসল কাজটা আরও ভালোভাবে করতে পারতাম। হ্যাঁ, মানে আমার ডেস্কে কতগুলো কাজ জমে আছে এই চিন্তাটা তাদের মাথায় ঘুরতে থাকে। হ্যাঁ, আর এই যে তাদের স্বাভাবিক কাজের রিদম বা ছন্দপতন ঘটে, এর ফলে কাজের প্রতি তাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত এনগেজমেন্ট ছিল তা কমতে শুরু করে। মডারেটেড মিডিয়েশন মডেলও এটাই দেখা গেছে। এটা তো বিশাল একটা মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা। মানে আমরা যাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি সে উল্টো ভাবছে আমরা তার কাজে বাধা দিচ্ছি। এবং এখানেই গবেষকরা একটা খুব সুন্দর লজিক দেখিয়েছেন। যখন প্রতিষ্ঠানে ট্রেনিংয়ের চাপ খুব বেশি থাকে তখন এই কর্মীরা ট্রেনিংটাকে একটা অতিরিক্ত বোঝা হিসাবে নেয়। এই বোঝার চাপে তাদের কাজের ফ্লো নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন ফ্লো নষ্ট হয়ে যায় তখন তাদের নতুন কিছু শেখার যে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হওয়া ক্ষমতা সেটাও দুর্বল হয়ে পড়ে। মানে অনেকটা ডমিনো এফেক্টের মতো। একটা ইট পড়লে যেমন পরপর সব ইট পড়ে যায়, তেমনি ট্রেনিংয়ের চাপ প্রথমে তাদের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তারপর এঙ্গেজমেন্ট কমায় এবং শেষে তাদের শেখার স্পৃহাকেই মেরে ফেলে। একদম ঠিক বলেছেন। এটা তো রীতিমতো চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটা ব্যাপার। আমরা এতদিন ধরে কর্পোরেট দুনিয়ায় যে সবার জন্য একই নীতি মেনে আসছি, এটা তার ভিত্তিমূলেই একটা বড় আঘাত। অবশ্যই। এই কারণেই ঘানার 10টি 4 স্টার হোটেলের বাস্তব ডেটা থেকে উঠে আসা এই ফলাফল এত বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটা তো কোনো ল্যাবরেটরির এক্সপেরিমেন্ট নয়, একেবারে বাস্তব কাজের জায়গা থেকে পাওয়া প্রমাণ। তাহলে এই পুরো আলোচনা থেকে আমরা মূল শিক্ষা কি নিতে পারি? বিশেষ করে যারা একাডেমিক জগতে আছেন, যারা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে গবেষণা করছেন, তাদের জন্য এই পেপারের শিক্ষণীয় দিকগুলো কি কি? একাডেমিকদের জন্য এখানে চিন্তার খোরাক অনেক। প্রথমত, ট্রেনিং নিয়ে আমাদের যে একটা অন্ধবিশ্বাস আছে, এই গবেষণা সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে। কনটেক্সট বা প্রেক্ষাপট এবং কর্মীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ট্রেনিংয়ের প্রভাব যে নেতিবাচকও হতে পারে, এটা একটা বড় আবিষ্কার। দ্বিতীয়ত, থ্রাইভিং বা কর্মক্ষেত্রে বিকশিত হওয়া নিয়ে আগের তত্ত্বে মনে করা হতো যে ওয়ার্ক এনগেজমেন্ট হলো থ্রাইভিংয়ের একটি ফলাফল। কিন্তু এই গবেষণা প্রমাণ করেছে যে এনগেজমেন্ট কোনো ফলাফল নয়, বরং এটি একটি মাধ্যম বা অনুঘটক। অর্থাৎ মানুষ আগে কাজে মানসিকভাবে এনগেজড হয় এবং সেই নিমগ্নতাই তাকে নতুন কিছু শিখতে সাহায্য করে। একদম ঠিক। আর যারা প্র্যাকটিশনার, মানে যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার বা এইচআর হেড হিসেবে কাজ করছেন, তাদের জন্য এর বাস্তব প্রয়োগ কি হতে পারে? ম্যানেজারদের জন্য এটা একটা খুব ক্লিয়ার সতর্ক বার্তা আর কি। আপনার টিমের সব কর্মীর কাজের স্টাইল এক নয়। যে কর্মী প্রাকৃতিকভাবেই একসঙ্গে অনেক কাজ সামলাতে ওস্তাদ, তাকে জোর করে গতানুগতিক ক্লাসরুম ট্রেনিংয়ের ছাঁচে ফেলাটা বোকামি। এতে তো প্রতিষ্ঠানেরই ক্ষতি, তাই না? হ্যাঁ, ম্যানেজারদের উচিত এই ধরনের কর্মীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের কাজের স্বাধীনতা দেওয়া। তাদের হয়তো দীর্ঘ ক্লাসরুম ট্রেনিংয়ের বদলে অন দ্য জব ট্রেনিং বা কাজের ফাঁকে ফাঁকে শেখার ফ্লেক্সিবল সুযোগ দিলে তারা আরও বেশি উপকৃত হবে। মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ কোনো কিছু চাপিয়ে না দিয়ে তার নিজস্ব শক্তিটাকে বুঝতে পারাটাই আসল ম্যানেজমেন্ট। এই আলোচনাটা করতে গিয়ে আমার মাথায় সমসাময়িক একটা বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। কি বিষয়? গত কয়েক বছরে তো আমাদের কাজের ধরন একেবারেই বদলে গেছে। আমরা এখন রিমোট ওয়ার্ক বা হাইব্রিড কাজের মডেলের সাথে খুব বেশি পরিচিত। তো এই ধরনের ফ্লেক্সিবল রুটিন, যেখানে বস সারাক্ষণ মাথার উপর দাঁড়িয়ে নেই, সেটা কি এই পলিক্রনিক কর্মীদের আরও বেশি বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়? এটা আগামী দিনের গবেষকদের জন্য একটা দারুণ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। হাইব্রিড মডেলে যেহেতু কাজের স্বাধীনতা বেশি, তাই পলিক্রনিক কর্মীরা হয়তো এই পরিবেশে আরও বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তারা তাদের নিজেদের মতো করে কাজের রিদম তৈরি করে নিতে পারবে। কিন্তু এর একটা উল্টো দিকও তো থাকতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। হসপিটালিটি সেক্টরে যেমন সরাসরি মানুষের সাথে কথা বলার একটা উত্তেজনা থাকে, ঘরে বসে ভার্চুয়াল কাজ করার সময় সেই হিউম্যান ইন্টারাকশনের অভাব তাদের মানসিক এনগেজমেন্ট কমিয়ে দেবে কিনা সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। আরেকটি বিষয়ে আমি ভাবছিলাম, এই গবেষণায় মূলত ফোকাস করা হয়েছে শেখা বা থ্রাইভিংয়ের ওপর। কিন্তু একজন কর্মীর তো আরও অনেক আচরণ থাকে, যেমন ধরুন নতুন কিছু অন্বেষণ বা এক্সপ্লোরেশন করা। এই অতিরিক্ত ট্রেনিং কি তাদের সেই আগ্রহকেও একইভাবে ধ্বংস করে দেয়? আপনি খুব গভীর একটা পয়েন্ট তুলেছেন। যখন আপনার ব্রেন একটা অপছন্দের রুটিনের কারণে ক্লান্ত থাকে, আপনার কাছে যখন নতুন কিছু খুঁজে বের করার মতো মানসিক এনার্জি অবশিষ্ট থাকে না, তখন এক্সপ্লোরেশন তো নিশ্চিতভাবেই বাধাগ্রস্ত হবে। মানে একজন ক্লান্ত জ্যাজ মিউজিশিয়ান কি আর নতুন কোনো সুর তৈরি করতে পারে? পারে না। ঠিক তাই।
ভবিষ্যতে হয়তো গবেষকরা এই এক্সপ্লোরেশনের দিকটিতে আরও বেশি আলো ফেলবেন। আজকের এই আলোচনা থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার, যে মানুষের মনস্তত্ত্ব এবং কাজের পরিবেশের সম্পর্কটা কোনো সহজ ফর্মুলা দিয়ে মেলানো যায় না। যারা শুনছেন তারা হয়তো নিজেদের কর্মক্ষেত্রের সাথে এটা মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেন। একদম। যারা এই আলোচনা শুনছেন তারা হয়তো আজই নিজেদের অফিসে বসে ভাবতে পারেন যে প্রতিষ্ঠানে ঘটা করে আয়োজন করা ট্রেনিং প্রোগ্রামগুলো কি আসলেই কর্মীদের সাহায্য করছে, নাকি তাদের সেরা কর্মীদের স্বাভাবিক প্রাণবন্ততাকে অজান্তেই ধীরে ধীরে মেরে ফেলছে। এবং সেই ভাবনাটাই আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় সফলতা হবে। ফিরে যাই আমাদের সেই হোটেলের লবির শুরুতে দেখা দৃশ্যটিতে। হ্যাঁ, সেই রিসেপশনিস্ট। সেই যে রিসেপশনিস্ট যিনি একসাথে হাসি মুখে ফোন ধরছিলেন, গেস্ট সামলাচ্ছিলেন, তাকে যদি এখন বলা হয় যে প্রতিদিন কাজ শেষে 2 ঘন্টা বাধ্যতামূলক সার্ভিস ম্যানুয়াল পড়তে হবে, তবে হয়তো পরের দিন তার সেই স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা আর থাকবে না। খুবই চিন্তার বিষয়। তো সেই হাসিমুখ এবং কাজের প্রতি তার স্বাভাবিক ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখাই হয়তো আগামী দিনের যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তারা নিজেদের চারপাশের পরিবেশটা একটু খেয়াল করে দেখবেন। আজকের মতো অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও অন্তরঙ্গ এই আলোচনার এখানেই সমাপ্তি টানছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। घाना के एक बेहद व्यस्त 4 स्टार होटल का फ्रंट डेस्क। माहौल में ना एक अजीब सी जल्दबाजी है। मतलब एक फ्रंट डेस्क कर्मचारी फोन पर किसी वीआईपी गेस्ट की शिकायत सुन रहा है और ठीक उसी वक्त सामने खड़ा एक नाराज ग्राहक अपनी बुकिंग को लेकर चिल्ला रहा है। हाँ, और उसी क्षण वो कर्मचारी कंप्यूटर पर एक नई बुकिंग भी दर्ज कर रहा है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर ना ये किसी भयंकर बुरे सपने जैसा लग सकता है। इतनी सारी चीजें एक साथ सिर पर आ गिरे तो कोई भी घबरा जाए। लेकिन अगर उस कर्मचारी के चेहरे को ध्यान से देखा जाए तो वहां तनाव की एक लकीर भी नहीं है। वो परेशान नहीं है, बल्कि वो इस पूरी अराजकता का आनंद ले रहा है। सही कहा। उसके चेहरे पर एक सुकून है, मतलब एक स्वाभाविक सी ऊर्जा है। और देखिए, ये कोई थ्योरी या कोरी कल्पना नहीं है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे हाल ही में बहुत गहराई से मापा और परखा गया है। तो जब हम किसी को एक साथ इतने सारे काम करते देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो इंसान पिस रहा है या बर्नआउट की कगार पर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इस तरह के तेज तर्रार माहौल में ही सबसे अच्छा काम करते हैं। और इसी विषय पर ना एक बेहद शानदार और गहराई से किया गया शोध सामने आया है। अच्छा, तो ये शोध किसने किया है? इसे यूनिवर्सिटी ऑफ केंट और ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज के माइकल एसिडू ग्येनासारे और मोनाश यूनिवर्सिटी की Gbemisola ने मिलकर किया है। साथ ही किंग्स कॉलेज लंदन के चिडीबेरे ओग्बोनाया और जोन-आर्क अग्यापोंग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ केप कोस्ट से भी जुड़ी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। वाह, मतलब काफी बड़ी टीम है। हाँ, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के हामिद रूडबारी भी इस ग्लोबल टीम का हिस्सा है। और इस शोध को जर्नल ऑफ ऑक्यूपेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है ना? हाँ बिल्कुल। और एकेडमिक दुनिया में इसे ABDC-A श्रेणी का जर्नल कहा जाता है। जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि ये कार्यस्थल के मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक गोल्ड स्टैंडर्ड जैसा है। इसमें प्रकाशित होने वाले शोध बेहद कठोर समीक्षा से गुजरते हैं। और क्योंकि यह हमारा सोमवार का विश्लेषण है तो हम शीर्ष पीयर रिव्यू जर्नल के नवीनतम प्रकाशनों पर ध्यान दे रहे हैं। जो लोग मार्च 2026 से हमारे नए साप्ताहिक स्केड्यूल से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि रविवार का दिन हम क्लासिक किताबों या पुराने महत्वपूर्ण पेपर्स को देते हैं। एकदम सही। ये नया शेड्यूल इन चर्चाओं को एक अलग ही गहराई दे रहा है। और हमने इसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, मतलब रविवार और सोमवार तक ही सीमित रखा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारा पर्यावरण है। हाँ, आजकल के AI असिस्टेड पॉडकास्ट्स और उनके बैक एंड डेटा सेंटर्स पानी और ऊर्जा की भारी खपत करते हैं। बिल्कुल। तो इन चर्चाओं को केवल 2 दिन तक सीमित रखना चर्चा की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन पहल में योगदान देने का हमारा एक सचेत प्रयास है। दुनिया भर में चल रहे इन तकनीकी बदलावों का एक पर्यावरणीय मूल्य भी होता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे सभी वफादार श्रोताओं को इस पहल का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अकादमिक गुणवत्ता और नई चीजें सीखने की बात निकली है तो एक नई और बेहतरीन पहल की चर्चा करना यहाँ बहुत प्रासंगिक होगा। एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट सिम डिवीजन ने जून 2026 से चुपचाप AOM SIM-Bytes नाम की एक नई मासिक पहल शुरू की है। हाँ, और ये शुरुआती करियर वाले शोधकर्ताओं और PhD छात्रों के लिए एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है। इसमें प्रबंधन समुदाय के वरिष्ठ विद्वान रील शैली के छोटे और ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहे हैं। इसका पहला YouTube शॉट प्रोफेसर एड फ्रीमन द्वारा है, जिन्हें स्टेकहोल्डर कैपिटलिज्म का जनक कहा जाता है। ये सच में अकादमिक दुनिया के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा है। और ये पूरी पहल सोशल इश्यूज इन मैनेजमेंट यानी सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी द्वारा संचालित की जा रही है। बिल्कुल, ये मूल रूप से ट्रेंट यूनिवर्सिटी ओंटारियो की प्रोफेसर शेल्डीन सिमोला के दिमाग की उपज है, और अब इसे कमेटी की चेयर जो लॉयोला यूनिवर्सिटी शिकागो की प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन है, उनके द्वारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये बताते हुए काफी खुशी होती है कि हमारे पॉडकास्ट निर्माता भी पिछले 1 साल से इस समिति के सदस्यों के साथ एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। वो AOM SIM-Bytes के कंटेंट डिजाइन और संपादन में मदद कर रहे हैं। इस पहल का लिंक शो नोट्स में उपलब्ध है। हाँ, ये नए शोधकर्ताओं के लिए एक खजाने जैसा है, और उसी तरह आज का ये शोध पत्र भी किसी खजाने से कम नहीं है। शो नोट्स में इसका लिंक दिया गया है, और इस चर्चा को सुनने वालों से आग्रह है कि वे इस सावधानी पूर्वक तैयार किए गए शोध को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। बिल्कुल। तो अगर अकादमिक शोध की दुनिया में बिल्कुल नए लोगों के लिए इस पेपर का एक बहुत ही सरल सारांश दिया जाए तो वो क्या होगा? अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ तो ये शोध बताता है कि कुछ कर्मचारियों को एक साथ कई काम करना बहुत पसंद होता है। इसे पॉलीक्रोनिसिटी कहते हैं, और ये पसंद उन्हें अपने काम में डूबने और नई चीजें सीखने में मदद करती है। अच्छा, तो मतलब ये उनके लिए कोई बोझ नहीं है बल्कि उन्हें मजा आता है? हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। जब कंपनियां ऐसे कर्मचारियों को बहुत अधिक ट्रेनिंग देने की कोशिश करती हैं, तो वो बेहतर होने के बजाय कमजोर पड़ने लगते हैं। यही वो विरोधाभास है जो इस पेपर को इतना खास बनाता है। हम हमेशा सोचते हैं कि ट्रेनिंग एक अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ ये एक रुकावट बन जाती है। इस पर विस्तार से बात करने से पहले ना मुझे उस पॉलीक्रोनिसिटी वाले हिस्से को समझना है। ये असल में क्या है? देखिए, ये कोई नई बीमारी या कोई जादुई शक्ति नहीं है। शोधकर्ता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि पॉलीक्रोनिसिटी कोई कौशल या स्किल नहीं है, बल्कि एक पसंद है। रुकिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। एक साथ कई काम करना मतलब क्या ये सिर्फ ध्यान भटकना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक साथ 4 काम कर रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैं किसी एक पर भी अपना पूरा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या ये सिर्फ काम को टालने या अव्यवस्थित होने का एक फैंसी नाम नहीं है? ये बहुत ही स्वाभाविक शंका है, और यहीं पर मोनोक्रोनिक और पॉलीक्रोनिक कार्यशैली का अंतर समझना होगा। ये क्षमता या कौशल के बारे में नहीं है कि कोई मल्टीटास्किंग में कितना अच्छा है। ये इस बारे में है कि वो अपने समय को कैसे व्यवस्थित करना चाहता है। तो मतलब कुछ लोगों को एक समय में एक ही काम करना पसंद होता है? बिल्कुल, वो एक काम शुरू करते हैं, उसे खत्म करते हैं और फिर दूसरे पर जाते हैं। लेकिन पॉलीक्रोनिक लोगों का दिमाग अलग तरह से तारबद्ध होता है। उन्हें एक ही समय खंड में कई कार्यों के बीच झूलना पसंद होता है। अगर मैं एक उपमा दूं तो पॉलीक्रोनिक इंसान की तुलना किसी मास्टर शेफ से की जा सकती है। रसोई में एक शेफ एक ही समय में सॉस भी चला रहा है और चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियां भी काट रहा है। हाँ, और बीच बीच में ओवन का तापमान भी जांच रहा है। एकदम सही। अगर उस शेफ से कहा जाए कि पहले सिर्फ सब्जियां काटो और जब वो खत्म हो जाए तभी सॉस को हाथ लगाना, तो वो शायद बहुत बोर हो जाएगा। उसे उस अराजकता में, उस एक साथ काम करने की लय में ही मजा आता है। ये उपमा एकदम सटीक बैठती है। उसे एक के बाद एक काम करना उबाऊ लगता है। और देखिए, इसे प्रोएक्टिविटी या अडेप्टेबिलिटी से भी अलग समझना होगा। वो कैसे? मतलब इनमें क्या अंतर है? एक प्रोएक्टिव इंसान पहल करता है, वो शायद एक ही काम को गहराई से कर रहा हो। एक अडेप्टेबल इंसान नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है। लेकिन पॉलीक्रोनिसिटी महज समय के प्रबंधन और कई कामियों को एक साथ करने की इच्छा से जुड़ी है। घाना की उन 4 स्टार होटलों के संदर्भ को लें जहां ये शोध किया गया है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम की प्रकृति ही ऐसी होती है कि एक काम खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ग्राहक सामने खड़ा है, फोन बज रहा है और सिस्टम पर अपडेट भी करना है। वहाँ ये स्वभाव किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि अगर किसी को वो तेज तरार तरीका ही पसंद है तो वो उसमें खुश रहेगा। लेकिन यहाँ से वो छलांग कैसे लगती है जहाँ वे कुछ नया सीख रहे हों? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ व्यस्त रहने या कई काम एक साथ करने से कोई इंसान अपने करियर में आगे कैसे बढ़ रहा है?
महज व्यस्त रहने और नया सीखने के बीच कोई सीधा संबंध नजर नहीं आता मुझे। और यहीं पर शोधकर्ता उस इंजन की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाता है। इस इंजन को अकादमिक भाषा में वर्क एंगेजमेंट कहा गया है। ये केवल काम करने से कहीं अधिक है। अच्छा, तो इसमें और क्या क्या शामिल होता है? वर्क एंगेजमेंट के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: ऊर्जा, समर्पण और तल्लीनता। जब कोई पॉलीक्रॉनिक कर्मचारी उस मल्टीटास्किंग वाले माहौल में काम करता है जो उसे स्वाभाविक रूप से पसंद है, तो वो बोर या थका हुआ महसूस नहीं करता। हाँ, वो ऊर्जा से भर जाता है। बिल्कुल, वो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है, जिसे फ्लो की स्थिति कहते हैं। ये थोड़ा विरोधाभासी है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि डीप वर्क के लिए सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद करनी पड़ती हैं, फोन साइलेंट करना पड़ता है, ईमेल बंद करने पड़ते हैं। हाँ, सामान्य तौर पर ऐसा ही माना जाता है। पर आप कह रहे हैं कि इन पॉलीक्रॉनिक लोगों के लिए यही अराजकता और कई सारे काम ही डीप वर्क या फ्लो स्टेट का जरिया है। यही इस पेपर की सबसे बड़ी खोज है। उनके लिए शांति और एक ही काम करना डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। जब वे अपनी मनपसंद गति और अराजकता में काम करते हैं तो उनका वर्क एंगेजमेंट चरम पर होता है। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। और जब कोई कर्मचारी इस स्तर पर अपने काम से जुड़ता है, तब असल में पनपने या थ्राइविंग और सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये पेपर एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल का उपयोग करता है जिसे सोशली एम्बेडेड मॉडल ऑफ थ्राइविंग कहते हैं। ये मॉडल असल में क्या कहता है? इसका मतलब क्या है कि कोई सोशली एम्बेडेड होके पनप रहा है? इसका मतलब है कि हम शून्य में या अकेले नहीं सीखते। हमारा पनपना हमारे आसपास के माहौल, हमारे सहकर्मियों और हमारे काम करने के तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ है। तो जब एक पॉलीक्रॉनिक व्यक्ति को उसके हिसाब का माहौल मिलता है तो वो सिर्फ काम नहीं निपटाता, बल्कि वो उस माहौल की ऊर्जा को सोखता है। एकदम सही। ये शोध पुरानी मान्यताओं को एक बड़ी चुनौती देता है। पहले के कई शोधों में एंगेजमेंट को एक अंतिम परिणाम माना जाता था। मतलब कर्मचारी खुश है इसलिए वो एंगेज्ड है और बस बात खत्म। हाँ, लेकिन ये पेपर साबित करता है कि एंगेजमेंट कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। ये दरअसल एक रास्ता है, एक चालक या ड्राइवर है जो सीधा सीखने और पनपने की ओर ले जाता है। तो ये महज व्यस्त रहना नहीं है, ये अपने स्वभाव के अनुकूल माहौल में पूरी तरह से घुल मिल जाना है और वो जुड़ाव व्यक्ति को अनजाने में ही नई चीजें सिखा रहा है। बिल्कुल, और यही सीखने की असली प्रक्रिया है। लेकिन हम अगर किसी कंपनी के पास ऐसे शानदार और ऊर्जा से भरे कर्मचारी हैं जो अपने काम का आनंद ले रहे हैं, तो कोई भी एचआर डिपार्टमेंट या मैनेजर क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि चलो इन्हें और बेहतर बनाते हैं, इन्हें नई चीजों की ट्रेनिंग देते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी यही सोचेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि कॉर्पोरेट जगत में ट्रेनिंग देना एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली चीज है, पर यह पेपर कहता है कि ट्रेनिंग उनके लिए नुकसानदायक है। एक अच्छी चीज कहानी की विलन कैसे बन गई? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये इस शोध का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हम मानते हैं कि ट्रेनिंग हमेशा ज्ञान और कौशल बढ़ाती है, लेकिन ये शोध दिखाता है कि कैसे कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ट्रेनिंग एक संसाधन खत्म करने वाली या रिसोर्स डिप्लीटिंग गतिविधि बन सकती है। ये कैसे संभव है? मतलब ट्रेनिंग से तो फायदा ही होना चाहिए ना? इसके पीछे के तंत्र को समझना जरूरी है। पॉलीक्रॉनिक कर्मचारियों के बारे में सोचिए। उनका दिमाग पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बना है। वे एक साथ कई चीजों को संभालते हुए एक लय में काम करते हैं। यानी आप एक ऐसे इंसान को जिसका दिमाग एक साथ 4 दिशाओं में दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, उसे एक कमरे में बिठाकर कहते हैं कि रुक जाओ, ये मैनुअल लो और पहले सिर्फ ये एक काम सीखो। ठीक यही होता है। ज्यादातर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मोनोक्रॉनिक तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, यानी पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2 और फिर स्टेप 3। तो जब कंपनी उन कर्मचारियों पर भारी और औपचारिक ट्रेनिंग का बोझ डालती है तो उन्हें अपने उस प्राकृतिक समानांतर प्रवाह से बाहर निकलना पड़ता है। बिल्कुल, उन्हें अपनी स्वाभाविक इच्छा को दबाना पड़ता है ताकि वे उस रैखिक या लीनियर ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी स्वाभाविक रूप से बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को दिन भर दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर किया जाए। वो लिख तो लेगा, लेकिन शाम तक उसकी दिमागी बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। वो ट्रेनिंग उनके लिए कोई सशक्तिकरण नहीं रह जाती, बल्कि वो एक अतिरिक्त मानसिक बोझ बन जाती है। इसे ही रिसोर्स डिप्लीटिंग कहा गया है। मतलब उनकी ऊर्जा जो उनके असली काम और फ्लो में लगनी चाहिए थी, वो उस असहज ट्रेनिंग के तरीके से तालमेल बिठाने में खर्च हो जाती है। हाँ, और ये उनके काम के प्राकृतिक प्रवाह को पूरी तरह से तोड़ देती है।
इससे उन पर मानसिक दबाव पड़ता है, उनका उत्साह कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप उनका वो वर्क एंगेजमेंट गिर जाता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। और अगर एंगेजमेंट का वो इंजन ही बंद हो गया तो उनका सीखना और पनपना भी वहीं रुक जाएगा। तो कंपनी ने अनजाने में ही उन्हें बेहतर बनाने के चक्कर में उनकी उस स्वाभाविक ऊर्जा को कुचल दिया जो उन्हें खास बनाती थी। यही तो ट्रेनिंग का डार्क साइड है। ये दिखाता है कि कैसे एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, जहां सबको एक ही तरीके से ट्रेन करने की कोशिश की जाती है, उन लोगों के लिए विनाशकारी हो सकती है जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो अगर हम इस पूरी सैद्धांतिक चर्चा को समेटकर वास्तविक दुनिया में लाएं, तो शिक्षाविदों और कंपनियों के लिए सबका क्या मतलब है? शिक्षाविदों के लिए ये शोध एक नई दिशा दिखाता है। ये बताता है कि एचआर प्रथाओं के अनपेक्षित नकारात्मक परिणामों को समझना कितना जरूरी है। मतलब वर्क एंगेजमेंट को महज एक अंतिम लक्ष्य मानने के बजाय एक मध्यस्थ के रूप में देखना चाहिए। बिल्कुल। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कार्यस्थल का माहौल सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। हर मैनेजमेंट थ्योरी का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और प्रबंधकों के लिए क्या सबक है, खास तौर पर जो मैनेजर्स रोजमर्रा के काम संभाल रहे हैं और ये तय करते हैं कि किसे कौन सी ट्रेनिंग दी जाए? प्रबंधकों के लिए ये एक स्पष्ट चेतावनी है कि उन्हें अपने हर कर्मचारी को एक ही मशीन के पुर्जे की तरह नहीं देखना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारियों के पॉलीक्रॉनिक स्वभाव को पहचानना होगा। मतलब अगर कोई फ्रंटलाइन कर्मचारी एक साथ कई काम करने में खुश है, ऊर्जावान महसूस कर रहा है और बेहतर नतीजे दे रहा है, तो उसे एक कठोर ढांचे में ढालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैनेजर्स को चाहिए कि वह उन्हें अंधाधुंध ट्रेनिंग के बोझ तले ना दबाएं। इसके बजाय उन्हें उनके काम में स्वायत्ता या ऑटोनॉमी देनी चाहिए। उन्हें खुद ये तय करने दे कि वे अपना काम कैसे और किस गति से करना चाहते हैं। यानी कभी-कभी सबसे अच्छी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप बस रास्ते से हट जाएं और लोगों को उनके स्वाभाविक तरीके से काम करने दें। हाँ, ये सच में इतना ही सरल और इतना ही जटिल है। जब आप उन्हें स्वायत्ता देते हैं तो वे अपनी उस पॉलीक्रॉनिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं, वो भी बिना थके और बिना बर्नआउट के। ये पूरी चर्चा ना हमें आज के दौर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। आजकल हम हाइब्रिड और रिमोट वर्क के युग में जी रहे हैं। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ही समय में अनगिनत टैब खुले रहते हैं। हाँ, और फोन पर लगातार स्लैक और ईमेल के नोटिफिकेशंस बजते रहते हैं। बिल्कुल। और हम जूम कॉल के बीच में कोई रिपोर्ट भी ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। हर काम एक साथ हमारी तवज्जो मांगता है। तो ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल खड़ा करता है। वो क्या इस नए डिजिटल माहौल में ये पॉलीक्रॉनिसिटी वास्तव में एक वरदान है या फिर ये एक डिजिटल जाल बन चुका है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों को कई काम एक साथ करना पसंद है, तो क्या हमारी आधुनिक तकनीक उन्हें उनका मनपसंद प्लेग्राउंड दे रही है? या फिर हम अनजाने में ऐसी नौकरियां डिजाइन कर रहे हैं जो लोगों के स्वाभाविक तरीके से काम करने की क्षमता को निखारने के बजाय उसे एक कभी खत्म न होने वाली थकान में बदल रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस तकनीक को नियंत्रित कर रहे हैं या तकनीक हमें नियंत्रित कर रही है। जब पॉलीक्रॉनिसिटी स्वाभाविक होती है तो वो ऊर्जा देती है, लेकिन जब वो थोपी जाती है तो वो बर्नआउट लाती है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो जब आप अगली बार अपने आसपास किसी को एक साथ कई काम पूरी शांति और मुस्कान के साथ करते हुए देखें, जैसे घाना के 4 स्टार होटल का वो फ्रंट डेस्क कर्मचारी, तो एक पल रुककर सोचिएगा, हाँ, शायद वो कोई तनाव में फंसा इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा कलाकार है जिसने अपनी स्वाभाविक लय को काम की उस अराजकता के बीच खोज लिया है। और शायद सबसे अच्छी चीज जो हम उसके लिए कर सकते हैं वो है उसे बस उसका काम करने देना। इस विचार के साथ कुछ समय बिताएं और खुद के काम करने के तरीके को भी टटोलें कि वो मोनोक्रॉनिक है या पॉलीक्रॉनिक। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Forestil dig lige følgende scene engang. Du står bag skranken på et utroligt travlt 4-stjernet hotel. Det er midt i check-in-myldretiden. Ja, det klassiske kaos. Præcis. Telefonen på disken ringer uafbrudt med den der, skænger insisterende lyd, der bare skærer gennem rummet. Og lige foran der står en gæst og gestikulerer helt vildt, fordi airconditioneranlægget på værelset larmer som en gammel traktor. Og der er sikkert også andre, der vil have fat i dig samtidig. Lige præcis. Du mærker en prikken på skulderen fra en anden gæst, der utålmodigt spørger om vej til en hæveautomat.
Og ude af øjenkrogen kan du se, at bagagebande ude i lobbyen netop er sat ubehæbteligt i stå. Kufferterne håber sig bare op. Det lyder som et absolut mareridt for de fleste. Altså, det er jo den perfekte opskrift på koldsved, hamrende hjerte, tunnelsyn og vel nok en uimodståelig trang til at gemme sig ude på personaletoilettet. Ja, helt sikkert. Men sagen er den, at for nogle helt specifikke mennesker, de elsker det. De blomstrer simpelthen i det her uforudsigelige kaos. De trives allerbedst, når de jonglerer 8 ting på én gang. Det er en utrolig fascinerende mennesketype, altså at observere. Og det er lige præcis det psykologiske fænomen, vi skal bryde ned i dag. Det kaldes Polychronicity. Eller på dansk, en udbredt polykronisk præference, ikke? Jo, nemlig. Det er nemlig ikke bare en evne til at overleve kaos. Det er en dybtliggende, altså en helt personlig forkærlighed for at have utallige bolde i luften på én gang. Det er simpelthen deres foretrukne arbejdsform. Præcis. Og vores samtale her i dag bygger på en yderst grundig forskningsartikel, som for nylig blev udgivet i Journal of Occupational and Organizational Psychology. Som jo er et ABDC-A stjernelistet tidsskrift. Nemlig. Hvilket altså i bund og grund betyder, at vi befinder os i den absolute globale superliga inden for akademisk ledelsesforskning. Det er her de tungeste og mest gennemtænkte teorier bliver trykt. Og vi skal lige have nævnt dem, der står bag, for vi skylder en kæmpe tak til et enormt stærkt forfatterhold. Forskningen er ledet af Michael Asiedu Gyensare. Han er fra University of Kent og Oxford Business College. Og han har haft Gbemisola Soetan fra Monash University med på hullet. Ja, og også Chidiebere, Ogbonnaya og Joan-Ark Agyapong. Begge to fra King's College London, og Agyapong er desuden tilknyttet University of Cape Coast. Lige præcis. Og så runder vi holdet af med Hamid Roodbari fra University of Surrey. At samle så internationalt en gruppe, det giver bare analysen en enorm dybde. Det gør det virkelig. Men inden vi for alvor åbner for forskningens maskinrum for at se, hvordan de har testet det her ude i den virkelige verden, så har vi lige en kort, men meget vigtig note til dig, der lytter med. Ja, det er rigtigt. Som du måske har bemærket, er vi siden marts 2026 overgået til en fast ugenlig rytme. Vi udgiver nu hver søndag og mandag. Søndag er til de store klassiske tekster og boganmeldelser, og mandag er som i dag, der fokuserer vi på de absolut friskeste publikationer fra top-tier tidsskrifter. Og der ligger en meget bevidst og klimavenlig tankegang bag den struktur. Ja, fortæl lidt om det. Jo, altså AI-assisterede produktioner af denne her kaliber, de kræver jo en enorm mængde computerkraft. Og det resulterer i et massivt vandforbrug ude i datacentrene for at køle serverne ned. Det er nemlig ret vildt, når man tænker over det. Helt sikkert. Så ved at begrænse vores udgivelser til 2 utroligt velovervejede episoder om ugen, så tager vi et aktivt medansvar. Vi giver ligesom noget tilbage til klimakampen, helt uden at vi mister et eneste gram af dybden i vores samtaler. Vi elsker jo vores loyale abonnenter, og vi er enormt taknemmelige for, at I støtter op om det her initiativ og vægter kvalitet over kvantitet. Nemlig. Og nu vi taler om kvalitet, så skal vi også lige nævne et andet fantastisk initiativ, der netop er gået i luften. Academy of Management SIM Division, altså afdelingen for Social Issues in Management, de lancerede i stilhed et nyt månedligt format i juni 2026. De kalder det AOM SIM-Bytes. Det er et fremragende initiativ. Det er det virkelig. Det er de her korte, knivskarpe, real-stylede videoer fra absolute seniorforskere. De er designet specielt til at skabe værdi for nye forskere og Ph.D.-studerende. Den første YouTube-short er faktisk med professor Ed Freeman. Manden, der definerede stakeholder capitalism. Lige præcis. Og for adgang til den slags hjernekraft i et let tilgængeligt format, det er jo guld værd. Og det drives af SIM Curriculum Development Committee. Vores egen producer her på holdet sidder faktisk i den komité og har frivilligt brugt det seneste år på at planlægge indhold og redigere de her SIM-Bytes. Det er så stærkt arbejde. Og det var professor Sheldon Semola fra Trent University i Ontario, der oprindeligt udtænkt ideen, ikke? Jo, lige præcis. Og nu bæres faklen så videre af komitéformanden, professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Vi har selvfølgelig lagt et direkte link ned i vores show notes. Ja, endelig tjek det ud. Og mens du er dernede i show notes, så vil vi indtrængende opfordre dig til at klikke på linket til dagens forskningsartikel også. Tag dig tid til at læse den. Den er utrolig velskrevet og grundigt peer-reviewet. Det er den. Og vores mission i dag er at bryde den her artikel ned. Så selv hvis du aldrig har læst en akademisk tekst før, så kan du sagtens være med her. Vi lader alt det tunge jargon blive i ordbogen. Helt sikkert.
Det handler om logikken bag forskningen. Præcis. Og hvis vi lige starter med at give et hurtigt overblik i helt simpelt sprog. Forskerne undersøger altså frontlinjemedarbejdere på 4-stjernede hoteller i Ghana. Og deres hovedfund er egentlig ret lige til. Medarbejdere, der har en naturlig præference for at multitaske, de lærer faktisk mere, og de trives langt bedre på jobbet. Men artiklen har et ret vildt twist. En form for mørk bagside. Ja, og det her, det bliver virkelig interessant. Nemlig. For når ledelsen, altså med de absolut bedste intentioner, overdynger de her medarbejdere med obligatoriske træningsprogrammer, så spænder de faktisk ben for dem. De ødelægger medarbejdernes naturlige flow og dræber deres motivation. Og det er jo selve kernen i artiklen. Men for at forstå, hvorfor det sker, så er vi nødt til at kigge på fundamentet for deres teori, det de kalder den socialt indlejrede model for trivsel. Okay, hvordan fungerer den? Jo, teorien siger, at vi mennesker trives bedst, når der er lad os kalde det en gnidningsfri overensstemmelse mellem den måde, vores hjerne foretrækker at arbejde på, og de krav, miljøet stiller til os. Giver mening. I mange år kiggede man i litteraturen udelukkende på multitasking som en mekanisk evne. Altså kan du rent fysisk udføre 2 ting effektivt på samme tid. Men den her forskning, den skifter fuldstændig linsen. Det handler ikke om din evne, men om din præference for at organisere din tid. Jeg ser det lidt som, tænk på det som at have en internetbrowser åben i hjernen, ikke? Det er en god analogi. Nogle mennesker foretrækker jo bare at have én fane åben ad gangen. Man læser en artikel færdig, lukker fanen ned og åbner en ny. Men for en polykronisk person, der er det helt naturligt at have, 20 faner åbne. Og det springende punkt er jo, at de rent faktisk nyder det. Ja, de går ikke i panik over kaoset. Nej, tværtimod. Det føles som den mest effektive måde at navigere gennem arbejdsdagen på. Men hvis vi ser teoretisk på det, hvordan adskiller den her polychronicity sig så fra bare at være enormt proaktiv eller omstillingsparat? For det lyder meget beslægtet. Det er et rigtig godt spørgsmål. Forskellen ligger i selve drivkraften bag. Proaktivitet, det handler om et ønske om at skabe forandring. Hvis vi tager en proaktiv receptionist, så vil vedkommende kigge på hotellets bookingsystem og forsøge at optimere selve processen for fremtiden. Okay. Men det gør den polykroniske ikke? Nej, slet ikke. Polychronicity har intet at gøre med at ændre systemet. Det er udelukkende en måde at orientere sig i tiden på. Den polykroniske receptionist vil bare gerne håndtere bookingen, mens vedkommende taler i telefon og samtidig lige dirigere piccolonen ned ad gangen. Okay, så de navigerer bare i nuet. Hvad så med omstillingsparathed? Jamen, omstillingsparathed er typisk en reaktion på noget udefrakommende. En krise eller en pludselig ændring, ikke? Men polychronicity er en konstant indre default-tilstand. Det er sådan, du foretrækker at arbejde, uanset om der er en krise eller ej. Det giver en meget klar afgrænsning. Og når vi så taler om at trives i den her sammenhæng, altså det forfatterne kalder thriving, så taler vi jo ikke bare om at være glad for at gå på arbejde, vel? Nej, overhovedet ikke. Og det er vigtigt at få med, i den her undersøgelse af trivsel meget specifikt defineret som læring. Altså følelsen af, at du kontinuerligt bygger nye færdigheder og vokser fagligt. Men der mangler jo ligesom et led i logikken her. Man bliver vel ikke per automatik klogere på hoteldrift, bare fordi man elsker at have 20 faner åbne op i hovedet? Nej, præcis. Kaos skaber ikke automatisk læring. Så der må være en eller anden kognitiv proces, der oversætter den her præference for kaos til faktisk målbar læring. Lige præcis. Og det er her arbejdsengagement, eller work engagement, kommer ind i billedet. Det fungerer som en bro, en mediator. Arbejdsengagement defineres ved et højt energiniveau, dyb dedikation og en følelse af at være helt opslugt, altså absorption. Når de her polykroniske medarbejdere får lov til at arbejde i et uforudsigeligt miljø, som en hotellobby, hvor opgaverne flyver om ørerne på dem, så opererer de i komplet harmoni med deres egen natur. Okay. Så fordi de slipper for at bruge en masse mental energi på at tvinge sig til at arbejde sekventielt, altså en ting ad gangen, hvilket for dem vil være enormt udmattende, så lander de i et decideret flow. Lige nøjagtigt. Og den flow-tilstand genererer et mentalt overskud, som de så bruger til at afkode nye mønstre, lære systemer hurtigere, eller forstå gæsternes behov på et dybere niveau. Så engagementet er ligesom motoren. Det er motoren, ja. Men vi skal lige dvæle ved det et øjeblik. For den måde, de positionerer arbejdsengagement på her, det er lidt af et paradigmeskift. Hvordan det? Jo,
Traditionelt har HR-afdelinger anskuet engagement som et slutprodukt. Man tænkte, okay, hvis medarbejderen lærer en masse og har en god chef, så resulterer det i, at de føler sig engageret fredag eftermiddag. Men forfatteren her, og de bakkes faktisk op af en massiv Gallup-rapport fra 2023, de vælger ligningen på hovedet. Okay, så engagement er ikke bare biproduktet af en god uge? Nej. Engagement er selve katalysatoren. Det er brændstoffet, der skal til, før læring overhovedet er muligt. Det er det, der driver processen. Jeg kan sagtens følge den teoretiske tankegang, men jeg tænker, det må skabe et ret stort metodisk problem for forskerne. Hvad tænker du på? Altså, hvis du går ned i en hotellobby i Ghana og spørger en receptionist, elsker du at multitaske? Er du engageret? Og lærer du meget på jobbet? Så vil langt de fleste af os jo instinktivt svare ja til det hele. Ja, man vil gerne fremstå som en super medarbejder. Lige præcis. Og det må da give en enorm bias i deres data, hvis de bare spørger folk om deres egen selvopfattelse på en tilfældig tirsdag. Helt bestemt. Det er faktisk den største faldgruppe i den her type forskning. Det kaldes Common Method Bias. Men, og det her studie er så stærkt, de brugte et trebølge multikilde-design for at undgå netop det. Okay, lad os lige pakke det lidt ud for lytteren. Hvad betyder trebølge? Det betyder simpelthen, at de skilte målingerne ad i tid. De fulgte 281 frontlinjemedarbejdere. I bølge 1 målte de udelukkende medarbejdernes polykroniske præferencer, og så ventede de en hel måned. Ah, okay. Ja, for så i bølge 2 målte de deres niveau af arbejdsengagement. Den her tidsmæssige buffer gør, at man ikke bare måler en her og nu følelse af, at de lige har haft en god frokostpause. Det giver mening. Så personlighedstrækket og engagementet er adskilt i tid. Men det løser jo ikke problemet med at skulle vurdere sin egen læring. Altså, hvis jeg selv skulle sætte karakter på min faglige udvikling, så bliver den nok ret generøs. Ja, det gælder nok os alle. Men det her multikilde-delen kommer ind i billedet i deres tredje bølge. For her gik forskerne simpelthen helt udenom medarbejderen selv. Nå, hvem spurgte de så? De gik til medarbejderens direkte kolleger, deres peers. De bad dem om at vurdere den specifikke medarbejders faktiske adfærd nede på gulvet. Observerer I, at personen tegner sig ny viden? Viser de tegn på at vokse fagligt? Ej, hvor er det smart udtænkt. Så de kobler altså medarbejderens egen rapportering af deres indre tilstand med kollegernes helt objektive observationer. Præcis. Det giver et statistisk fundament af usædvanlig høj kvalitet, for det fjerner fuldstændig muligheden for bare at tegne et glansbillede af sig selv. Okay, så vi har stærke empiriske beviser for en positiv spiral. Medarbejdere, der elsker kaos, de finder et naturligt engagement, som så fører til reel, observerbar læring. Nemlig. Og hvis man som leder har identificeret sådan en guldklump af en medarbejder, så vil det logiske næste skridt vel være at tilbyde dem efteruddannelse. Altså at rulle nogle træningsprogrammer ud for at støtte dem endnu mere. Men ifølge artiklen, så er det præcis her korthuset ramler, ikke? Jo. Det er her, vi rammer studiets absolut mest provokerende opdagelse. Vi skal tale om det, der fungerer som en boundary condition, en grænsebetingelse. I årtier har litteraturen troet på den her dynamic transfer model, som basalt set siger, at mere formel træning altid er godt. Altså, jo mere træning, jo bedre performance, punktum. Lige præcis. Det betragtes som en ubetinget ressource, men forfatterne viser, at for lige præcis den her gruppe af polykroniske medarbejdere, der kan træning faktisk fungere som en decideret trussel. Prøv lige at forestille dig det kognitive maskinrum bag det her. Forestil dig en genial jazzmusiker. Okay, jeg er med. Han står på scenen midt i en fantastisk, uforudsigelig improvisation. Musikken flyder bare, han reagerer intuitivt på de andre og behandler 100 indtryk i sekundet. I fuld flow. Præcis. Og pludselig stopper dirigenten koncerten. Han giver musikeren et nodeark og tvinger ham til langsomt, trin for trin, at spille basale C-dur-skalaer. Altså, nodetræningen er helt sikkert ment som en hjælp, men den dræber jo fuldstændig musikerens momentum. Det er en utrolig præcis analogi for, hvad der foregår kognitivt. Det polykroniske sind kører jo på det her momentum. Så når du tager en receptionist, der jonglerer telefoner og gæster med høj energi og trækker dem ud i et baglokale for at gennemgå, et standardiseret trin-for-trin-systemkursus, så tvinger du dem ind i en rigid, sekventiel kasse. Lige præcis. Du tvinger dem til at bruge single-tasking-muskler, hvor de skal fokusere snævert på én ting ad gangen. Det kræver en enorm overvindelse for dem, og det slider på deres mentale batteri. Så træningen opfattes pludselig som ressourcedrænende i stedet for opbyggende.
Men hvor vild var den effekt rent statistisk? Altså taler vi om, at der var et par receptionister, der var lidt irriteret over at skulle på kursus, eller var det mere markant? Det var voldsomt markant. Hele 93% af samlet. Vent lige, 93%? Det er jo næsten dem alle sammen. Ja, næsten alle ramte et niveau, hvor de oplevede træningen som en direkte barriere. Det lagde bare en administrativ byrde oven i et forvejen travlt tempo, og det kvalte deres naturlige gejst. Og når engagementet styrtdykkede, ja, så fulgte læringen og trivsel med ned. Hold da op. Det er jo totalt opgør med tanken om, at vi bare kan kaste mere træning efter vores bedste folk, for at få dem til at vokse. Det er det virkelig. Så lad os samle trådene her mod slutningen. Hvad er de vigtigste takeaways fra denne her forskning? Både for akademikerne og for praktikerne. For akademikerne er det klare budskab, at vi ikke længere kan ignorere tidsmæssige præferencer. Polychronicitet er en massivt overset brik i trivselsforskningen, og så er Dynamic Transfer Model altså blevet udfordret. Træning er en kompleks størrelse med reelle skyggesider. Og hvis vi skal oversætte det til ledelse ude i virkeligheden, stop med at bruge standardiseret træning som et universalt middel. Et one-size-fits-all-program kan decideret brænde jeres mest dynamiske medarbejdere ud. Har I folk, der trives bedst i flow og multitasking, så giv dem autonomi til selv at strukturere deres læring. Nemlig, for ellers bliver din velmente hjælp årsagen til, at de mister gnisten. Og forskningen åbner jo op for nogle utroligt nysgerrige fremtidsperspektiver. Hvad sker der for eksempel i en tid med fjernarbejde? Ja, tænk på det. Når man sidder helt isoleret på sit hjemmekontor, uden det naturlige kaos fra kollegaer, begynder den polykroniske medarbejder så bevidst at opsøge digitale forstyrrelser for overhovedet at holde hjernen i gang? Det er et fascinerende spørgsmål. Eller hvad med jobcrafting, når folk selv designer deres jobs? Vil de skrue bevidst op for kompleksiteten? Vi har set det her virke for hotelansatte i Ghana, men gælder den samme dynamik for en softwareudvikler i København? Konteksten er jo altafgørende. Det er den. Vi er ved at nå til vejs ende i vores undersøgelse i dag, og jeg vil gerne lade dig, der lytter med, sidde tilbage med en provokerende tanke. Tænk over din egen arbejdsdag i morgen. Når du åbner din computer eller træder ind på din arbejdsplads, så mærk de efter, at de strukturer, de mange processer og de obligatoriske kurser, som din organisation kalder for støtte, er de i virkeligheden det, der dræler dit momentum. Holder det dig tilbage fra at blomstre? Måske er det på tide at trække en grænse og beskytte dit helt eget workflow. Det er i hvert fald en meget nødvendig refleksion i dagens arbejdsliv. Vi vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og husk endelig at tjekke vores show notes. Der ligger links til både artiklen i Journal of Occupational and Organizational Psychology og til det nye spændende AOM SIM-Bytes initiativ. Lige præcis. Og vi er allerede tilbage i dine højtalere i overmorgen med endnu en undersøgelse af den skarpeste forskning. Indtil da, giv dig selv lov til at arbejde præcis som din hjerne foretrækker det. Pas godt på alle dine åbne faner og pas på dig selv. Tak for i dag.